ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ କରତାଳି ଟିକେ ଦେବା ଲଙ୍ଗ କରତାଳି। ଆମର ଡିଓ ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ବିଏଡ୍ କଲେଜର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଏଠି। नहीं यानी सर है नहीं बस सुनी नहीं हाँ हाँ हम मुख्य अतिथि बर्तमान पहुंचुଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ
धन्यवाद अतिथिवृंद। बर्तमान हम गुरु छात्र मानको गुरु छात्री मानको अनुरोध करछि सेमाने आसी स्वागत सहित गान करिवे प्राइस का आसीबे। गुरु छात्री प्रियंका को साथी आपन को अनुरोध करा होछि आगो आसीबे। आगो बस स्वागत सहित धीरे 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 मेघ बरसिला छम छम कोइलीर कुहू मीठा मीठा सुरे गाउछु आमे सरगम गाउछु आमे सरगम स्वागतम 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 वनौपवने फूल फुटिछि बसंत कहुछि किए आसिछि धन्य तार भाग्य धन्य से आछि प्रभुकर गुण जिए गाउछि नदी धारा परी जाउछु बही मनर कथा जे कहुछु एही झुकुटी मझिरे तिलक देई आत्मस्मृतिर संदेश नेई अतिथि सत्कार करे चौदिग नुपुर करे पादे छम छम नुपुर करे पादे छम छम स्वागतम 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 मेरा कुआऊ लेला न करी आसो छाड़ी जीवा ए लक्ष्य धरी निजକୁ बदली स्वर्ग रचिबा भाई भाई भाव मने धरिबा हसी हसी कहे नील गगन पुण्य मनरे सुख सपन धन्य होई गला आम जीवन जेबेठु होईछि प्रभु मिलन ज्ञानर दीपक जଳି उठे जेबे चमके आत्मा ज्योति चम चम चमके आत्मा ज्योति चम चम स्वागतम 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 धन्यवाद गुरु छात्र छात्री सीट माटी दउछ आम अतिथिगण को आउथरे स्वागत जणाउछि। सो आज आम बहुत मान गर्वित बहुत खुशी जे एभली अतिथि मान आम बहुत समय अपेक्षा करथिले समस्ते एवं से उपलक्षे आम अतिथिगण उद्देश्य आउ भी करताली गोटे हिजा गोटे आम प्रतिष्ठान श्री रामकृष्ण परिचय महोदय शिक्षक प्रशिक्षक को सी आम अतिथि मान परिचय प्रदान करेंगे एवं ये सेमिनार उद्देश्य ज्ञापन करेंगे। श्रीयुक्त महोदय श्रीयुक्त परिचय महोदय
यूट्यूब टा राइट ऑन बोल समस्त को नमस्कार। এটা खुशी শেয়ার विषय आज आम पिलांको अनुष्ठान ग्रुप रे छाड़ गोटे एमती कार्यक्रम हाथ को नहीं जहाँकि नेशनल लेवल ले यूट्यूब माध्यम से समस्त देखी पार्टी आम आज वर्षा ऋतु हसुधा परिपूर्ण देखा जाऊ नुआ बहुपरी साजी होइछे। आज एई परिप्रेक्षी रे मु आपण माननकु काट के आउथर कविता के कहबी आसुछ बोलिक तुमे आसुछ बोलिक तुमे आकाश बांधीची घुंगुर अरण्य के आशा मोर तिल तिल तृष्णा रे आखिल। सम्माननीय अतिथिगण आज यही सेमिनार कार्यक्रम आम ग्रहण में उपस्थित अच्छा मुख्य अतिथि रूपे श्रीजुक्त निरंजन साहू महोदय जिला शिक्षा अधिकारी महाशय को स्वागत जनाऊँच वाम पार्श्व उपस्थित अच्छा आम डॉक्टर पूर्णचंद्र बेहेरा प्रोफेसर नवकृष्ण कोइली कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तत्सहित ऑनलाइन में बर्तमान जोड़ी होती डॉक्टर लीलाधर दे एसोसिएट प्रोफेसर इग्नो न्यू दिल्ली कीबोर्ड स्पीकर हिसाब से मुख्य अतिथि डाहाण पार्श्व विराजमान अच्छा आम जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अंगुल छेंडीपदार अध्यक्ष महोदय श्रीजुक्त साहू महोदय जे आज सेमिनार पैटर्न रूप कार्य करेंगे तत्सहित आम ग्रहण में उपस्थित अच्छा यही कार्यक्रम बिंधाणी एवं सबू कार्य को सुचारू रूप संपादन करने निमंते संयोजक हिसाब से काम कर सेमिनार कन्वीनर श्रीजुक्त मदन सुंदर प्रधान महोदय आज ये कार्यक्रम को समस्त को स्वागत ये कार्यक्रम स्वागत करने सहित मुख्य अतिथि विषय में जब मुझे कहवाई चाहिए आपण मैंने समस्त अवगत अच्छा सी आमर लोकप्रिय तथा समस्त अति निजर जिला शिक्षा अधिकारी समस्त सहित खोला हृदय मिसार जड़े व्यक्तित्व खुशी लगे सार सहित कथबार्ता अति परिचित भाव से कथबार्ता हमें खूब भल लगे। नमस्कार सर। ज्ञान गंताघर हिसाब से जदि आम देखा आम अनुष्ठान गोटे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन अच्छी जहाँकि आम मैंने पाठ पढ़ी आसवे ज्ञान गंताघर हिसाब से जड़े शिक्षाविद रूपे आम डॉक्टर पूर्णचंद्र बेहेरा सर अति परिचित से गवेषणा कार्यकलाप जो सब जगह परिचित अच्छा आम ऑनलाइन में बर्तमान जोड़ी होती जहाँकि आम गोटे सौभाग्य विषय डॉक्टर लीलाधर दे एसोसिएट प्रोफेसर आम सार को आम ग्रहण खूब खुशी अर्जन करुचे मन में अति आनंद अनुभव सहित आम जिलार गौरव तथा आम अनुष्ठान मुख्य पुरोधा प्रति कार्य हाथ बढ़ाई आमको सहयोग दे सब कार्य आम सहयोग करद्वारा कि आज कार्यक्रम सफल कर आज बिंधाणी आज सब कार्य आगमन ही करने सहित ये कार्य को सफल करने निमंते चेष्टारत आमर वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक श्रीजुक्त मदन सुंदर प्रधान महोदय को मोर आंतरिकता शुभेच्छा जनाऊँ समस्त यही परिप्रेक्षी में मोर अतिथि परिचय प्रदान को शेष करने पूर्व राधामोहन गणनायक गोटे कविता पाठ करने चाहूँगी थाऊ तार नाम आउ उच्च पद थाऊ तार पछे अतुल संपद सबु अकारण सबु दुथा सीना नबाचिले हृदय देश प्रीति धन्यवाद।
धन्यवाद श्रीयुत रामकृष्ण परिचय महोदय आपण बहुत सुंदर भाव में आम अतिथि मान परिचय प्रदान कर Welcome to our humble stage. Honored to have you turn the page. Your presence lights up the way. We are grateful for your time today. Thank you for being our guest upon a good day. Thank you, sir. What class is out here? ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପାଟ୍ରନ ଏବଂ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରି ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ A very good morning and warm welcome to all of you. Esteemed chief guest, Mr. Niranjan Sahu, District Education Officer, ANGUL. Today's distinguished guest, Purnachandra Behera, Professor, Navakrishna Chaudhary, College of Teacher Education, ANGUL. Virtually connected, our distinguished guest and keynote speaker, Dr. Nirada De, Associate Professor, IGNO, New Delhi, Seminar Convener, all my learned faculties, all delegates, all paper presentees, student teachers, and those who are joining us on YouTube platform. So once again, I would like to welcome you all to this national level seminar on the theme Innovative Classroom Practices for Attainment of FLN Goals. So being the principal and patron of this seminar, I would like to express my heartfelt gratitude to one and all who have joined us today for taking pain and they are making this event a success. So as you and all of us know that this seminar is based on the theme Innovating Classroom Practices for Attainment of FLN Goal, and FLN is the fulcrum of our national education policy. In recent past, that is in 2020, the new national education policy was rolled out, where foundational literacy and numeracy was the key, or I would say the key recommendation of the policy. Foundational literacy and numeracy is a big concern not only for our district but also for the state as well as for our nation, because most of the students, those who belong to FLN grades, I mean those who belong to class 1 and 2, they are not in a state to read and comprehend simple text. They are not in a state to calculate small arithmetic problem involving simple addition and subtraction, which is a national crisis. It's a learning crisis, I would say, and it has also been recommended that if we are not achieving, or if we are not achieving the universal foundational literacy and numeracy in a near future, and specifically I would say by 2026-27, then all other recommendations for higher education would be meaningless, or I would say will go in vain. So lot of brainstorming, lot of emphasis is being given on achievement of foundational literacy and numeracy. That's why I have taken this thing, because the target group is of teachers, CSCs, headmasters, and educational administrators. So unless and until we
materialize this big aim of our education system, then the efforts that are put behind the national education policy will not be fruitful. So that's why we have taken this theme, and some things are also there. And I must congratulate all our paper presenters because they have toiled a lot to prepare papers. Are theme based and so also. So in the coming 2 days, we'll be presenting all those papers, and a vibrant brainstorming, vibrant thought process will be involved in the process to arrive at a conclusion, which will ultimately help us to achieve the universal foundational literacy and numeracy. I must welcome our who is a brilliant academician. As our faculty was citing that he is a very amiable person. He loves to mix with the subordinates, especially with the teachers, and he guides everybody to bring an excellence in our education system, and particularly I would say in the district of our ANGUL. I must congratulate and welcome our guest of honor, and who will be participating as resource person throughout the day, Dr. Purnachandra Behera sir, Professor FKCT ANGUL, because he has come here and joined us to share his thoughts, to share his expertise in the field of education. And most importantly, I must welcome our keynote speaker, who is going to set a tone for the participants as well as to the paper presenters and the delegates and the faculties of our institute also, with his expertise, with his excellence, with his academic bent of mind, and a lot of experiences having with. I must congratulate and welcome all our paper presenters, our delegates, our student teachers and faculties. And last but not the least, the seminar convener, Mr. Madan Sundar Pradhan, senior teacher educator, who has put a lot of effort behind the background, behind the scene, to make it a successful one. So, I would like to encourage all participants, all delegates, to make themselves engaged in an active manner throughout this seminar by listening carefully, by sharing their expertise in their field of work, in the field of their schools, whatever they have been experiencing in schools, they must share here during our presentation. They must ask questions so that this seminar will be an interactive one. So I must encourage our paper presenters to make the delegates, to make the presenters engage in the presentation. So before I conclude, once again I would like to congratulate our esteemed guests, dignitaries, our faculties, our delegates, paper presenters, and who have been watching this program on a live streaming on YouTube mode. Everybody who are participating, even our student teachers,
They have been made the part of this program because they are going to become our future teachers. They will be leading the society. And a new education system, as the national education system is being implemented in a phased manner, and they will be the most important part of the system who will make it a successful national education policy in implementing in future. So everybody must remain alert and keep themselves engaged throughout the seminar. So once again, my sincere and heartfelt gratitude to one and all. Thank you all. Thank you, dear Patton. With your support, we stand tall and strong. With your support, we stand tall and strong. Your guidance lights the path where we belong. Your guidance lights the path where we belong. We are grateful for your trust and care. We are grateful for your trust and care. You inspire us to reach. You inspire us to reach beyond compare. Beyond compare. Thank you, Patron, for being always there. Have a big clap for sir. बंधुगण बर्तमान मुझे गुरु छात्र छात्री को अनुरोध करुच्ची से आम अतिथि वृंद को संबोधित करेंगे समस्त आम टिके पड़ा टे समस्त गुरु छात्र टिके आग को आसवे एवं आमर अतिथिगण को संबोधित करने आगे देशरे मध्य गोटे आम गोटे आम टिके दाई साथ में गोटे 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 साथ गोटे आम सर नमस्कार सर हम वॉइस ऑफ सुभाष सर यस सर थैंक यू सर सर आम तरफ सर मध्य आपको आम वर्चुअली गोटे गिफ्ट सर ऑफर करछु ठीक कैमरा सामने सर ठीक टू सर को अनुरोध करी ठीक कैमरा सामने को देखेबे ठीक सर गोटे सैम्पलिंग सर आपको ऊपर करछु एवं आम सर एठी सेटा लगे दबो हम डायरेक्ट रे आपको पाई सर आ गोटे सर उपडोकर मत आपन पाई सर रखिछु आ गोटे बैच साउंड बैच ठीक देखे दियो ठीक थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू आगे थैंक यू अगेन समस्त बस पड़िया हमें सो वर्तमान हमरो इनोट एड्रेस हम टिके सुनिबा हम कोन उपस्थित छथि डॉक्टर इराधर दे एसोसिएट प्रोफेसर इग्नो न्यू दिल्ली एवं सर दिलु हम सहित जोड़ी छथि हम समस्त नोटबुक टिके समस्त बाहर करिबा खाता पेन समस्त बाहर करिबा एवं ए सेशन रे आपण माने जानि छथि जे ज्ञान जी महाकुंभ हम बहुत नॉलेज हम पाइबा तो समस्त टिके लिखि देबा टिके तो वर्तमान मु हमरो इनोट स्पीकर डॉक्टर इराधर दे महोदय अनुरोध करूची से तांकर एड्रेस प्रदान करिवे सर सेट कनेक्ट करो लैपटॉप रे कनेक्ट करो एटा এটা হেইতলা हाँ तो पहले से हम सुन given me a task to say something that we can say the keyboard address of this seminar.
Before starting my presentation, I must congratulate the principal of Diet School, to manage such a nice organization. Aros. And I think the time members in this room, some other disconnect ट्रायल करो ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ଆପେ ହେଇଛି ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ट्रायल करो ଆଉ ଗୋଟେ ଆରଟା ଇଏ କର I found note that we have been available district education officer, କାଟିବ କେମିତି equally, I also found note that Dr. Purnachandra Vedraji is professor of ଆର ସ୍ପିକର ଟା ଏଠି ଥିଲା କିଏ ନେଲା ଭଏସ କମ Dr. Madan Sudan Pradhan, educator of Diet Group, and the organizing committee, I will take their name, Dr. Parmeshwar Sahuji, Mrs. Namita Sahuji, Mr. Ramakrishna Purichandi, and Mr. Subscribe, and all my dear students, listeners, and participants. Just give me 2 seconds of time to share my screen, and then after let's discuss. I will take 25 to 30 minutes to deliver this keyboard address, and then after you proceed as per your schedule. I love to take 2 questions if you have your mind. So just give me 2 seconds of time. Yes, sir. Yes, sir. I hope my screen is Tudo certo. full for. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, friends, the topic that is sent to me, what that is foundational stress and literacy goals as per the National Education Policy NEP 2020. These are some of the discussion points and the very context of today's national seminar. That is, we will try to understand the National Education Policy 2020 on foundational literacy and literacy goals. What it says about the FLL goals in the NEP 2020. Then further, we will try to understand the foundational literacy, FL, the very concept of FL. What does it mean? And the very concept of foundational numeracy, that is FM, what does it mean? Then we will try to understand what is the need for the foundational literacy and numeracy. What is the need of it? What crisis is with us today, so that we are gathered here and in different platforms and in different audience, we are discussing about the foundational literacy and numeracy. Further, we will try to understand the implementation of the universal FLN. So how we can implement it universally, so that the concept and its implementation will spread across the state, across the diet, college of teacher education, across the school, and across the academic fraternity, I can say. Further, how can we develop curriculum for the literacy and numeracy goal? Then we will try to understand the SPM, that means the school preparation material. So, how can we develop a program
develop a system so that the FL1 then we will also try to understand. Let me to reiterate, just go back to the National Education Policy NEP 2020. What it says, if you have gone through the NEP document, which is in the website of the Ministry of Education, Government of India, and this is also in the public platform. You can download the NEP document, which is a 66 pages of summary document. You can say this is not the main document of the National Education Policy. The main document is very big, and this is the, you can say, crux, and this is the summary. And the entire NEP document that has been drafted, that has been notified, and designed in 4 different chapters, 4 different parts. Part 1, it talks about the school education, including the early childhood care education. Part 2 is on higher education, including teacher education. And part 3 is other key areas of focus. It includes, or that includes professional, adult and lifelong learning. Then part 4 is that is making it happen, including finance and implementation. That means the entire document drafted in such a way, it is not only to discuss the vision, the fundamental principles, and the recommendations, rather how to implement each and every recommendation that is given in the NEP. So that's why a dedicated section, a dedicated part, a dedicated chapter is given in this NEP in the name of making it happen. That means how we can implement. Let us go forward. We can go through, because we may talk about the foundational literacy and numeracy or other aspects. First of all, we should understand about the very vision of the national document, of the National Education Policy document. The vision of NEP 2020 says that, let me to read, I have taken it from the document. National Education Policy envisions an education system rooted in Indian values that contributes directly to transforming India, that is Bharat, substantially into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. I am very much, inspired to go through the last, 4 words. Global India, a global knowledge superpower, right? Whether it is or not, I think it is possible. We have a, glory. I think we know about the history of our country, the development of our country, the rich heritage of our country, the knowledge system of our country, and that is also equally addressed in this NEP document, that is IKS, Indian Knowledge System. We can talk about the Nalanda, etc., and other ancient system of education that was flourished in our country at the time, and it was equally attracting the scholars, the teachers, the students, the philosophers, the researchers from across the globe. They were coming here, spending their time, staying with us, you can say a decade or more than that also, and they were learning from us about our system, about our education, right? About our culture, about our diversity, about our indigenous knowledge system. And by the passage of time,
That glory, I think I can say that I can't say that that glory is vanished. Rather, I can say, no, hardly we are realizing its importance. Hardly we are getting inspired, getting motivated to reiterating our past glory, our past. This is the document. This is the education policy and in 2020. Again, it tries to re-energize us, to inspire us to go back and to just get an idea that what type of contribution that we have made at a time, not for to our country's self, rather I can say globally. Why the people, why the scholars, why the researchers, why the statesmen, leaders were getting attracted towards our country? What was with us? And why we lost all our glory? Why we are not expected attractive to global let's say community? So keeping in consideration, I can say that the last section or the last line that has mentioned here, making India a global knowledge power. The NEP talks about everything I can say, all aspects of our life, our education system, transforming the entire system of education so that we can go back and at the present time also again we can return that glory. Let us go forward. To achieve the vision of the national education policy, quickly let me go through the fundamental principles. One of the fundamental principles I can say the excellence, attainment of also achieving the foundational literacy and literacy goal. But at the same time, being a teacher educator, being a practitioner, being a teacher in a school, and being a training teacher, a student teacher, we're supposed to understand about the fundamental principles, right? What NEP says, what concept and what principles really it addresses, so that we can develop the holistic system of education, inclusive system of education in our country at all stages of education. If you go through the document, you will find that the fundamental principles that have been addressed, that is recognizing unique capabilities of each child. Every child which is coming to our education system, coming to our school, they are coming with unique capabilities, lot of life experiences, and how to use those capabilities, how to use those potential energies, and make them acquaint and bring them to the mainstream of the society. The NEP. Then further, no hard separation between disciplines. Why there is a separation, or you can say distinction between the disciplines? Yes, every discipline is having its own body of knowledge, one research structure, you can say the values, the theories, the concepts. But at the same time, if you go through the very concept of the discipline and its practices, you will find that no discipline is alone, or no discipline is independent. Rather, you can find that other disciplines are somehow related with the discipline. The knowledge base which is addressed in the discipline is linked with other disciplines. So that's why I need to say that why there is a hard separation between the disciplines. Why our learners, why our students cannot get enough opportunities to select a course, to select a you can say a paper of their own study from other disciplines, extract their own risk, own aptitude, own knowledge, and own test. But the conceptual understanding rather than rote learning, I'm not taking much time. Fundamental numeracy and literacy, specifically your seminar is on this fundamental principle that how to achieve the fundamental numeracy and literacy. Your principal, Dr. Vikram Kumar Sahuji now was talking about that if I compare the achievement of our students, particularly in mathematics and language, as well as the
ETS also. Why our students, particularly at the school as a school stage, at the foundational and preparatory stage, why they are lacking behind the minimum level of learning, achieving the minimum level of mathematical knowledge, computational knowledge, and minimum level of learning relating to literacy, relating to language and literature, relating to different skills that are being addressed in understanding the literature, understanding the language. So why it is happening, and why every time we are thinking about the students are lagging behind the learning outcome that they're supposed to achieve in a particular class. So that also further I will be discussing. So this is one of the very pertinent to so far as the foundational and preparatory stage of education is concerned. Next fundamental principle, that is the multidisciplinarity and holistic education. I think you might understand the very concept of multidisciplinary education. Whether we can say that our education system, the curriculum that we practice, it may be school education, it may be higher education, it may be teacher education, whether it is a holistic curriculum, whether it is a multidisciplinary curriculum. So what is the very concept of a multidisciplinary curriculum? Whether addressing a multiple discipline is a multidisciplinary aspect, or whether when we are developing a curriculum, whether we are writing certain study material, if we are providing inclusive knowledge, integrated knowledge or holistic knowledge to the students relating to different areas of knowledge, we can say that is multidisciplinary. You should understand it. Multidisciplinarity is not only add few disciplines, rather to take concepts, principles, practices of different disciplines and contextually use it to develop a syllabus, to develop a curriculum, or to develop a textbook, or to develop a study material. So that also equally addresses that the flexibility in selective process. Why not we give much or enough work to the learner, work to the students to select the course of their own choice? But we can say that our education system is not providing more choices to the students. Yes, few choices are there so far as elective courses, so far as specialized courses are there, but that choices is also very limited. So I need to say that huge number of choices should be provided to the students. We never know what type of potential abilities are with our learners. The other fundamental principles, that is creative and critical thinking, have to develop through our curriculum, our courses. Ethics and human value, we have observed that there is the huge deterioration of the value of the ethical standards, the moral value, the virtue. So how to achieve it? How to integrate it with our curriculum? Then promoting multilingualism. You might be knowing that our country is highly diversified country in the world. The most diversified country in this world. We have huge diversity. So far as language, our culture, our system, our practices, and people visit from one place to other place, from one side to other side, from one system to other place, that you can get understanding. But we never consider that all these diversities are complete. We consider that these diversities are our strength, and these diversities help us to make us united. And so that's why we can see unity among all these diversities. Here, promoting multilingualism means multiple languages as per the schedule of our holistic teachers. 22 languages. So now, it is said that the and the end of said that Microsoft will provide learning material and classroom teaching atmosphere in one's own language. In one's own language. And I thought we that's why and the not work is happening. Translate the learning material and develop process in one's own language.
So that the learners can therefore understand in a different way, having their own languages. Then developing life skills. Life skills is another important aspect, right? This these skills that really help us live our life, help the learner to live their life. So that's why life skills should be part of our integrated part of our curriculum. Regular permanent assessment, extensive use of technology, respect for diversity and respect for local context, practicing equity, equality, and quality. It is not only achieve equality, and we cannot achieve equality if we not address equity, right? Samata and samanata, right? हम समानता अचीव नहीं कर सकते हैं यदि समता हम अचीव और समता एडवर्स कर हमारे क्लासरूम हमने एस्टैब्लिश so that's why we have to address equity ठंडा আছে এটা by কোনের the টপিকে address নিয়ে যাচ্ছে equity we can achieve equality so that's why we shouldn't talk only equality rather we should talk about the equity and at the same time when we talk about equity that kind of quality comes to the context. So practicing equity, equality and quality is emphasized by the and synergy in curriculum across the lab. So how the curriculum is linked with from a lower to the higher stage. That means foundational stage curriculum in school education is linked with the preparatory stage. Preparatory stage is also linked with the you can say middle stage. Middle stage is also equally linked with the secondary stage. And secondary stage is also equally linked with the tertiary education higher stage. So that's why there will be a synergy. Teachers are the heart of the learning process. Outstanding research, deeply rooted, and to feel proud to be an Indian. I think this is the essence. We should feel proud that we are Indians. We should feel proud about our culture, about our diversity, about our language practice, and about our indigenous system of knowledge and indigenous practices. It may be in agriculture, it may be in medicine, in Ayurveda, and many other aspects. So that's why we should feel pride of it and we should appreciate all such things, and that will help us to grow, to understand, and to contribute. So, after discussing all these fundamental principles of the National Education Policy, now let us come to the classroom situation. The FLN, Foundational Education Phase, after all, it is a matter of our class. Right? So, why it is only FLN? Why not it is to other subjects? So, it talks about or it gives us the message that how we engage our students in our classroom. Whether we can say that our classroom is an engaging classroom. After all, if we are not engaging our
which India is. So our learners, our students are left behind so far as language skill is concerned and computational skill is concerned. So that's why we are addressing into that how to access, how to achieve it. So why there is the need of the foundational literacy and numeracy? Here you see this is taken from the NCERT. This survey, the assessment survey relating to class 3 and class 5. You see the data. This is low learning levels, increased dropout rate, and inappropriate language and mathematical skills. In class 3, number of schools sampled, that is 41,059. Number of students sampled in the survey, that is 6,56,133. And number of teachers sampled in the study, in the research, in the survey, 83,536 teachers were involved. And what is the result so far as the literacy and numeracy competency is concerned? Language competency, that is average performance of the student, was 67%. But about the another 33%. Mathematics, the average performance of the student was 60%. What is about the rest of 37%. Then EPS and hospital studies 64%. What about the another 46%? Then if I talk about class 5, here you see number of schools sampled, that is 41,120. Number of schools addressed plus 96,686. And the number of teachers sampled, that is 87,585. And what is the result? So far as language, the average level is 58%. Mathematics 50%. Just around 50%. But about the rest 47%. Half of the percentage of the students, they have not achieved the minimum level of learning so far as mathematical competency is concerned. Then in EPS, it is around 56%. So this is the need, this is the crisis that how to address the language and computational, the mathematical skill and language skill of the students, so that they achieve the minimum level of learning and achieve the language and mathematical competency and skills. The NDP 2020 has given two targets, that is every student, so far as the FLS is concerned, every student will attend foundational literacy and numeracy by grade 3, achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. We are presently in this year 2025. I don't know whether universal will achieve the FLS goal or not. Achieving reading, writing, and arithmetic at the foundational level, that is the only 5-year level. 3 years of the primary and 6 years of the formal schooling, class 1 and class 2. A national mission on foundational literacy and numeracy will be set up by the Ministry of Education and Science, particularly to plan and implement the issues relating to the FLS. The state government as well as the union territory government will immediately prepare an implementation plan for attainment universal FLS in all primary schools by 2025. We are in this year. That is state government, the union territories, they will come forward and they will prepare that plan and implement that plan also to achieve the FLS goal. Then again, NDP says that maintain PTR equal teacher ratio, that is 30:1, and socio-economically disadvantaged areas, it is 25:1. I think most of the state huge teacher appointments that have been taken place, and we are nearby this ratio. I don't know that the ratio is still very high. Continuous professional development for teachers and addressing FLS, just like you have arrange this seminar for professional development teachers, preparation of school, preparation module SPM to detail students in grade 1, development of high quality resources of FLM for teacher. I think you might be knowing about the teacher
particularly managed by the Central Institute of Educational Technology (CIT) and NCRT. It addresses students' issues relating to their curriculum, right? Language skills, mathematical skills, and it develops more passing of an online courses relating to the school-based curriculum. Right? It also equally addresses the professional development of teachers through different online books, online courses. Strategies to adopt peer and group tutoring on FLM, to establish for the environment in the classroom for peer learning and group learning, formulation of a national youth promotion policy to provide literature support. So it will develop the material, quality material, and disseminate that quality material to the institutions and to the schools, particularly for the academic. To understand the foundational literacy, fundamental literacy, these are the certain things that that we are doing in our classroom, and if we are not going to school, be concerned about it. Just like reading is comprehension, whether we are engaging our students in reading the text or not. Writing reflects child's experience, right? So we are encouraging students to develop the narratives and to write that narrative also. Then writing for various purposes. Why only to write about the things that are addressed in the curriculum, about mathematics, about language, about social studies? Why not we create an atmosphere in our classroom to write whatever they like, maybe related to any language, maybe related to their family, maybe related to their thinking process, their thought process, what they really think. Right? So why we are not providing much scope to the learners to go beyond the curriculum, go beyond the syllabus, and to express themselves and to write it? That may help them to develop their, you can say, language skills. But the listening and speaking with comprehension, you see a group of students, they're talking with each other, right? And they're trying to understand each other also. So that's why it is not like that in a classroom we will inform and deliver a lecture. Rather, varieties of peer and group activities to be conducted. And many times, a complete class period can also be dedicated for a group discussion on peer activities. Let's go forward. For instance, how this one numeracy I can say, whether the students are competent in counting the things, understanding about the numbers, application basic operations of numbers for problem solving, for small school problems related to syllabus or the problems from other sources also, development of mathematical thinking, whether the students are developing the thinking process of mathematics. I can say that a teacher can be a great teacher, can be a good teacher, if the teacher thinks about what he or she is studying, what he or she is doing, what he or she is implementing. If we stop thinking, then we cannot enrich our teaching behavior. So that's why what I think, आप लोग जितने ही पढ़ते हैं, उतना ही सोचिए. Think about yourself that what is there in the text and how this can be illustrated, this can be exemplified in a better way. What are the different situations that are centered around in your immediate environment where you are living that can be properly depicted, that can be properly exemplified in the classroom? That can only come from the thinking, from your thoughts. That's why, my friends, my young teachers, always engage yourself in thinking about what you are doing in the classroom. Development of number sense. You see, you can develop number sense in different ways, like using different attributes. Let us go forward. Implementation of universal excellence.
So that's why setting of next is on the NHIT has priority to universal excellence. It is not like that a state will achieve the excellence goals, but not the state. So how uniform development will occur across the state, across ministries. It is not all about decentralization. How can you develop a proper plan and how to achieve universal excellence by 2025 to be prepared by the state and junior secondary government? And how can you develop the curriculum? And what are the different aspects that we are supposed to address as far as developing this syllabus and curriculum to achieve the excellence? Just like pedagogy should include playful and experiential activities to engage as much you can for the learners, and that should be the part of your curriculum, right? Because they are coming forward with many experiences. Think twice whether you are using those rich experiences of the learners in curriculum deliberation or not, in curriculum transaction or not. It is helpful for developing mathematical thinking, numeracy, number sense, and spatial understanding. Whether you are doing that. For the resources locally developed extra-national guidelines. So what are the different types of resources you are using in your classroom? Whether you are getting resources at your local level, yes, you will think that you will get many resources. So think and try to gather the resources and use it. Formative assessment and adaptive assessment. So now, formative assessment is given more importance in comparison to the selective assessment and adaptive assessment, personalized assessment, that is, contextualized assessment, situational assessment, student-specific assessment. That's real, in the real sense that we can say, if we do that, we can achieve the equity, only the equality. A single test is not enough for all students. Rather, to know the ability of the students, we have to use varieties of tests, different tests, because all students have different, very different. They're reading with comprehension, writing with understanding, and speaking with coherent thought. So our curriculum should include all these four things. Then we can say that we may achieve the excellence. Then the SPM, school preparation module. So four different things are here. The module, an element of the school preparation module, what material should be used, who will develop the material, and where it will be developed. The module that will be 3 months play-based tutoring for all grade 1 students that can be implemented at the Bal-Bhatik at the foundational steps. What are the different elements will be there, aspects will be there in school module? The courses that will develop, the material that will develop, that the activity can be one. Colors, sets, and numbers involve collaboration to the material to be developed by the NCRT and the SCRT. And where it will be developed? Stand alone Anganwadis. Where it will be utilized? Stand alone Anganwadis. Anganwadis co-located with the schools, inside the schools, and stand alone preschools. All these things you are doing, and I think in future you are going peer tutoring. We are just teaching to the students. Are you doing a type of peer activity? Are you doing a type of the group activity? You see, why you are not like doing such type of things in group discussion in our class? Why the teacher is not addressing each and every students in the class? Why the teacher is not inviting
the students and giving scope to write something on the board, to address their colleagues, to address their their peers, their friends. They will develop confidence, and at the same time, they will also learn that how to speak. After all, this is also this health and nutrition is also another important aspect. When we talk about health, then definitely the mental health matters. So that's why regular health checkup and health boosting mental and physical health and energizing breakfast additional to it. This is it might be implementing in the system. Though it seems that it is not directly related, but I can say that also related with learners development with language, mathematics, and other areas of knowledge. Now, resources. We have to get the resources from the ministry. Setting up of school and public libraries in the remote area. Just like the school, by the school, the library can be set up. By the community, in the villages, by local government at the panchayat level, municipal corporation level. The digital libraries for all. Just like Dixie I was studying here, you find very beautiful small books available in this, particularly for the teachers, for the teacher educators. E-Pathshala, you find very good video lessons are there in E-Pathshala. Then NRVR, National Repository of Educational Resources. The learning resources you will get, right? That can be reproduced, that can be reused. There is no problem. Workbooks and activity next year. That's the learning, develop the learning kit, then best material. The National Book Promotion Policy, part of the National Education Policy, so far as attainment goal is concerned, ensure the availability, accessibility, quality, and readership of the books. Whether the books are available, whether the students are getting the access to use those, whether quality is maintained in developing the process, then what is the readership of the books? How many are reading the book? Otherwise, it is just in the library. So, such resource support have like to our learners. I think in the diet we might be doing. The National Repository of Open Educational Resources, here you see the NRVR, the high quality resources developed by such institutions just like NRVR, E-Pathshala, textbook with QR code, XR, the e-book, e-content, e-course, and e-library. Then assessment. Here you see four types of assessment has been proposed here. Assessment for learning, assessment in learning, assessment as learning, and assessment of learning. Assessment of learning, this has been designed as part of behavioral concept of teaching and learning, behavioral approach of teaching and learning. But we are talking about so far as constructivist approach of teaching and learning. Sir, technically रखुची. Sir, आपको slide जा सकती है movement के होने को दे. Sir, slide जा सकती है. हाँ, आगे sir, slide जा सकती है चालू नहीं बोलते आपको sir. Sir, slide जा पर sir constant रहेगी. अच्छा, side move करो नहीं. हाँ sir, move करने टिके. अच्छा, what is move करो. Let me to try that. आगे sir. ତାଙ୍କ ପଟୁ ଅଛି ହଁ ଏବେ ଆସିଲା हाँ सर एबे सर आसिला सर आसिला हाँ सर आसिला सर Is it visible? yes sir So I have made it full screen. Whether full screen is visible? आसिबी सर पटन आसिबी हाँ एबे सर असेसमेंट आसिला हां ओके तो ये टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें टू रीच एट यू है ना इट इज ऑल अबाउट
सिग्नल जहाँ सिग्नल अच्छा है डाटा का सिग्नल anyway. So assessment, we are talking about assessment. It should be assessment for learning. So far as the constructivist approach and constructivist concept of assessment is concerned, that means we are not implementing the assessment strategy just to assess the ability of the student. Rather, we have to design assessment. That assessment will help to get new ideas, to achieve new knowledge, and your assessment will help to create new knowledge, right? To generate new knowledge, to enhance new knowledge. So in this way, we should integrate assessment in every lesson and try to implement assessment in such a way that you are doing a type of peer assessment. You are doing a type of group assessment, right? So now assessment is not something different from teaching and learning. When there is teaching, there is assessment. So that's why in ANGUL it says that adaptive assessment and formative assessment. Every class you can do a peer assessment. You can observe the behavior of the students, observe the engagement of the students, and you can assess their performance also, right? By engaging students in different ways, you can do a type of interview, interaction, and you can also observe the things. Formally and informally, you can do the assessment. We try always to use a tool, use a test. Without using a test, we can also assess the students, right? So many times there may be subjectivity, but still that try to engage yourself in different ways to assess the ability of the student. Adaptive assessment is says that we understand each and every learner, each and every student in our classroom, right? So that's what we have to design assessment accordingly. We have to design assessment accordingly so that every student should take the benefits of it, right? So that means we have to find out that what are the different areas of question we should involve in the test. Whether only achievement test is enough, or with the achievement test, other types of tests can also be taken. So varieties of tools, varieties of techniques can be used. And every activities that you are doing in our classroom, it should be centered around, or it should be linked with the learning outcomes, right? The learning outcomes of this learning. What type of learning outcomes the learners are supposed to achieve? If it is not happening, I can say the Attainment goal is all about achieving the learning outcome. Somehow we are failed to achieve the learning outcomes. So we should very much concern about the learning outcomes. Let me to go forward. Now, very quickly, let me to focus upon the National Curriculum Framework for School Education 2023. What it says. Also equally talk about the Attainment. Right. The very objective is to ensure quality education for all, holistic development of all aspects of the human child, addressing real challenges in life. That talks about equality life skills. Through life skills, we can address the challenges of our life. So that's why it is not only the content that are included in the syllabus in the curriculum. That we should talk about that when we are going out of the school, how we can live our life. That integrated pedagogy and integrated pedagogy, so far as different, so far as the you can say new curricular and pedagogical structure of school education is concerned. That is 5 + 3 + 3 + 4 system of education. What pedagogy is appropriate at the foundational stage? What pedagogy is appropriate at the middle stage, at the preparatory stage, or at the second stage, including the senior second. These are the certain features of the NCERT AC 2023, just like biannual board exam, multilingual emphasis. That also equally talked about the Attainment goal, subject groupings, learning beyond the road, students in a language in Odia, in Hindi,
In English, what they are doing simply they are developing comments, they are developing rote memory. Right? उसे रट लेते हैं, जाकर उसे लिख लेते हैं. And if you ask them what's the real meaning of it, they can't explain. So that means जो FLN goal है वो सिर्फ rote memory से नहीं हो. They have to understand and they have to practice. Celebrating India's contribution, the feature of flexibility should be there in the curriculum. Changes in the curriculum. Assessment will be assessment for learning, assessment as learning, assessment in learning, but less than assessment of learning. But assessment of learning will be there because it is the combination of formative as well as summative. But give much emphasis upon the formative things that we are doing every day in the classroom. Then arts and interdisciplinary areas are missing. Propose changes in the specific subjects. So these are the features. And now let me to focus upon the six-fold learning approach to address the NCFA 2023 concern. It says that engaging height senses of the learners for better learning, for better achieving the mathematical skills, for better achieving the computational skills, for better achieving the language skills. Using inferences. So whether the learners or even if the teacher educators, the training teachers, whether they are developing inferences or not, they are developing certain assumptions or not, then analogy and comparison, then perception of non-existence for developing the abstract knowledge. I will take another few minutes, 2-3 minutes, then I will complete. Then limited knowledge. So this six-fold learning approach is addressed by the NCFA and somehow it is linked with the LN code. And let me focus upon another one or two slides that teacher education, because when we talk about school practices, then we also equally address the teacher education issue. Just like in-service continuous professional development for practices online and backend code, which means all aspects of our school education system, including the FLN. Professional development for Swayam and Diksha. I don't know how many you are aware about the Swayam and the Diksha, and how many have you pursued a course in Diksha or not? Then standardized online training program for large number of teachers. It is not possible to do everything face-to-face. Rather, in the hybrid mode, we can do this. Right? We can engage huge number of teachers, students, teacher educators in different aspects. And finally, I can say that a national mission for mentoring has been established with a large pool of outstanding senior retired faculty members, including those with the ability to teach in Indian languages, who would be willing to provide short and long-term mentoring or professional support to the university and college teachers, including teachers. So that's why I can say that it is the right time that to use the expertise knowledge locally available, from the retired teacher of the language teacher in mind, and take their mentoring, invite them to the institute and just a discussion with the students. You can connect with me. I am in different social media. I have my own YouTube channel. If you want, you can be a part of it. And you will find, including FLN, you can find many teacher education related concept related material, related videos that you might like to join and watch and understand. So thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. For attainment of Attainment goal, and now it is open. If you have any queries, you can ask questions. Let me present it now. যদি কেই কোশ্চেন আমরা পচারিବାକୁ চাହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ 2 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆ ହେଉଛି 2 ରୁ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କୋଶ୍ଚେନ ଥାଏ ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରିସାର ମହୋଦୟ ଟିକେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ
Sir, sir, namaskar. Sir, you have told many types of assessment procedure, and one of them is adaptive assessment. And in the adaptive assessment, is it feasible for us to adopt this adaptive assessment in classroom process? Because in our situation, each and every child is special for us, and mainly in the situation, in practical situation, how can we manage to adopt this adaptive assessment in classroom procedure, sir? Please, sir, suggest. Very pertinent question. Adaptive assessment. So, how can you practice it, particularly in the inclusive schooling system? You see, all our school, we consider that all our school is inclusive school, right? We are not appreciating exclusion, rather we are appreciating inclusion. NEP says that so far as foundational stage is concerned, development stage is concerned, the pupil and teacher ratio, it should be 30:1 and 25:1. So when you are getting 30 students or when you are getting 25 students to address, and it is not all about a single class. Throughout the year you are addressing the student. You might be knowing the ability of the students, the strong point, weaknesses of the students, the special ability of the students, aptitude of the students. किसका किसमें रुचि है, right? But our system, what it provides us, our system. हमें कहा जाता है कि ये टेस्ट है, आपको क्वार्टर इस टेस्ट को यूज करना है, and this is a very monotonous system, और उस टेस्ट को हम यूज करते हैं, right? But being a teacher, I can say, being a teacher, I know my students, and I have every right, being a teacher, that I can implement in a different ways in my classroom what I think that it is good for my learner, it is good for my students. Though a single test has been provided, I know I use the information of other tests or other techniques. Right? Because it is not exclusive, it is inclusive. We are addressing students coming from diverse background, maybe language, maybe socioeconomic strata, right? Maybe from different able or children from different able background, right? So that's why I can say that 100 types of things you do, but try to include few more things that you can really able to do, right? So always don't make permanent and very much strict yourself that I have to do this, because all students will not benefit by those things. But like you said, we have a time schedule, time constraint to for the curriculum, complete the curriculum, and in a semester we have our target that what next week. But at the same time, if I am a scared teacher, a motivated teacher, I can implement certain new things for my students. Anytime you might be knowing many hour teachers in different areas, and if you talk to them that in what way you are managing your classroom, you'll find if you go through their narratives, if you go through their story, you'll find that they will say you differently, and they can show you that they have kept in archive, they have made good documentation. So, क्या आप छोटे छोटे वीडियो नहीं बना सकते हैं आपके क्लास में? ये एक्टिविटी जब आप करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, छोटी सी वीडियो बनाइए, रील आप बनाते हो, बाहर जाकर किसी पार्क में रील बना सकते हो। क्लासरूम आपके बच्चे जब पढ़ते हैं कि नया इनोवेशन, नया टेक्निक में जब वो पढ़ाते हो या बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हो, why not you make it and why not you disseminate that video among your colleagues, among your faculty, and why not you try to understand that what implication of what new results you are getting for that, and how students are getting motivated to do their things. So my dear friends, my intention is not like that. Adaptive assessment means we have to understand our learners, then accordingly we have to create a new activity.
that what are the new things that we can do, and that can be the add-on of the existing practices. The existing practices है, उसके साथ कैसे हम नया चीजें add-on कर सकते हैं, so that I can you can make your teaching behavior very child-centered and very activity-centered, so that your students, your learners will be satisfied, and you can better assess the achievement of your learners. Not every time permanent. You can do anything permanent. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Again, how can question? Sir, one more question, sir. Camera. Good afternoon, sir. Sir, do you think now it is the right time to change the people-teacher ratio from 30:1 to 15 or 18:1? Yeah, you want to take the PPT? So people-teacher ratio from now it's 30. People-teacher ratio, right? People-teacher ratio. So one that is 30:1. Yes. People-teacher ratio 30:1. That is in the normal situation, and socio-economically disadvantaged sections, disadvantaged areas, it is 25:1. Keeping in consideration of FLN, achieving FLN goal. Yes, sir. So at least for FLN classes, it should be 15 or 18:1, I think. कितना बोल रहे हैं आप? Sir, 15:1. One teacher and 15 students. At what stage? FLN classes 1 to 3. Okay, but this is as per the national, national document. It says that 35:1 at the socio-economically disadvantaged area, and FLN classroom 15:1. If you have got certain notification and if you are practicing, I think that it is good that you are getting 15 students to address them. Then better you can implement your curriculum. Better you can address the need of the students. Thank you, sir. Thank you, sir. How can question अछि? ठीक अछि. Thank you, sir. Thank you, sir. Again. Question आपका किछ अछि कि ना? Sir, this is for you. Your words ignite a spark in our mind. Your words ignite a spark in our mind, inspiring us to think and to shine with expertise and passion. You take the stage, sharing knowledge and insights that turn the page. Thank you, keynote speaker, sir. Thank you, keynote speaker, sir, for your enlightening age. Thank you again. Sir, please share the PPT to our patron, sir. Sir, sir, please share the PPT to our patron, sir. Thank you, sir, again. Thank you, sir, again. Thank you, sir. Sir, you can lead now, sir. धन्यवाद बंधुगण. सो आम सहित जोड़ी जाइए डॉक्टर निराधर दे एसोसिएट प्रोफेसर इग्नो न्यू दिल्ली एवं सांको देश आउट बड़ ताली जो टिके बर्तमान बंधुगण आपण वेलकम करिवा हमर गेस्ट अटेंडर डॉक्टर पूर्णचंद्र बेहरा प्रोफेसर नवकृष्ण चौधरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन एवं सांको हमें ताकर अभिभाषण बर्तमान सुनिबा सर. Thank you, Shah, for giving me an opportunity to address the gathering here.
our chief guest, Dr. Niranjan Sahu, DO ANGUL, Honorable Principal of this institute, Mr. uh, Vikram Kumar Sahu, Honorable Sir, faculty of this institution, participants from different schools of ANGUL district, students of this institution also, and other dignitaries present here. So at the outset, I would like to extend my satisfactory thanks to the principal Vikram Babu for inviting me to this occasion and to share my views on this topic. Actually, and prior to me, Dr. Niradhar Dey has already given a very nice deliberation, nice presentation, and he has covered a lot of dimensions of NEP 2020, and particularly on this topic, foundational literacy and numeracy skill also. And as I'm a teacher educator, from my own experience, I will tell you something about this topic. So let me first start from the goal of NEP, National Educational Policy. Why this National Educational Policy? I think most of you have already read it, have already attended different types of programs on it. So just a very few word I would like to tell you that this new educational policy is a very historic document which gives much emphasis on holistic development of the students. Holistic development. This is all different types of development, mental development, physical development, social, emotional, spiritual, all sorts of development will come under it. This is the first thing. Second, the most important one which the earlier policies have not given importance, that is the Indian rootedness. Indian rootedness means our education system should be rooted in Indian history, Indian culture, heritage. This is the new one here. But earlier policies have not given coverage. Another thing is that this new education policy is a document which will lead us to the global knowledge power. We must have heard that our Prime Minister is always telling that by 2047 we will be a developed country. Viksit Bharat, isn't it? And this present generation will be a part of this developed country by 2007 we will be there. So, any problem? अच्छा अपन माने ओडिया रे कहले ठीक हो कि इंग्लिश रे कहले ठीक हो ओडिया रे कहले हैं ठीक है हैं हां बस बेटर अपन ठीक से कहले हार्ट अछि ठीक अछि तेणु आम समस्त ओडिया रे कथा बोले किछ असुविधा नहीं तेणु अपन से जिनस को हम कहबे आप चाहसी जो विकसित भारत में प्रधानमंत्री को जो सपना रही हम समस्त टिके मिक्स हो इंग्लिश ओडिया टिके मिक्स हो तेणु तेणु आम समस्त यही जो वर्तमान पीढ़ी में रही विकसित भारत जड़े जड़े सभ्य हाँपी निश्चित भाव में आम सीआडे को अप्रोच कर चलते आगे विचार बढ़ी चलते तेणु बढ़ी चलने आम वर्तमान स्थिति को बदल न बदल आम से विकसित भारत स्वप्न देखिपारे से स्थिति को जाए से शिक्षा व्यवस्था ये शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन कले आम विकसित भारत को पहुंच यहाँ हूँ गोटे बड़ स्वप्न आम प्रधानमंत्री तथा वर्तमान सरकार तेणु से आमको
এই সুযোগ আসছে हमको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ता ভিতরে আমরা রয়েছে এই যে ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি এন্ড নিউমারেসি তা সম্পর্কে আপন মানে ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡିଆ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେକୁ ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିବିନି କେତେଟା ଯୋଉଟା କି just I will just cover certain untold part of this country जोटा कि अन्य माने जानू नांती कि मो निजर अनुभूति ता भीतर जति जड़ित हे रहिछि मु सेही जिंस शेयर करबी आ समय भी मध्य कम केते समय भीतर आवश्यक 5 मिनिट पार परसेंट है तेणु मत बेसी समय भी नेबी नहीं देखियो हां हां पछरे अछि तेणु मु खाली केतरा जेबी तार ऑब्जेक्टिव कोन काहे कि हम एफएलएन कर सकते अपन माने देखिथिबे विभिन्न सब सर्वे रिपोर्ट आसुथबो एबे भी रिसेंटली सर्वे सब आसीची अष्टम श्रेणी पिला माने द्वितीय श्रेणी बही पढ़ी पर नांती पंचम श्रेणी पिला माने द्वितीय श्रेणी मैथमेटिक्स पढ़ी पर एई टाइप रे सब सर्वे सब अपन माने देखुथिबे सर्वे एथु अपन माने कोन बुझुछन जे प्रॉब्लम ता कोठी रहिछि प्रॉब्लम ता हम पकर रहिछि ना व्यवस्था भीतर रहिछि ना सरकारी जो कलरे रहिछि कोठी भूलता रहिछि जोते कि पिला माने पर्यंत ए प्रकार स्थिति रे अछन तो ए जो स्थिति को सुधारिया पाई आमे जदि पिला माने को भीतर जो फाउंडेशन ता को जदि स्ट्रांग न करिबा ताहले पिला माने आगो को जाय परिबे नै सेते भाई हमको फाउंडेशन स्टेज को कहतो जे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कहते नै तो आपण माने जानि थिबे जे चाइना रे गोटे बाउंस गछ बडा बडा गछ अछि ये सुइथि से देश हमर सेटा कोन होय तार गोटे नेमति बाउंस जेमति गोटे माने कवर जा ता तो एमति मंजिर होय नै तार गजर उठे तार मूल गछ बाहरी उठे सेबे भाबरे सेठी गोटे गछ अछि से गछ तो ताको से पोते देले से 5 वर्ष पर्यंत किछि होबनी से आ 5 वर्ष तक प्रत्येक पानी पानी देके दवा पड़ो पानी तार सरफर जहां तो दवा दवा पड़े और 5 वर्ष परे से हठात एमिति उठिबो जे पूरा 100 फुट को नहीं हां बड़ा बामुट्री टाइप रे उठे बाबू माने जो श्रेणी से गछ से यार अर्थ कोन ने जदि हमर ताकू जने फाउंडेशन ठीक भाबर देबा अब जदि केयर नबा ताहले उठी जिबा क्या से तो हमर स्थिति मते से जदि हम फाउंडेशन को स्ट्रांग न करबा पिला माने करो ताहले पिला माने भविष्य रे शिक्षित हे परिबे नि के भलो नागरिक टिके हे अगर फाउंडेशन को स्ट्रांग करियो कहले ए हमर एफएन जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बिना लिटरेसी न्यूमरेसी रे फाउंडेशन स्ट्रांग होबो नाही अक्वर करे आपण जते बळे हमें प्रिपरेटरी स्टेज को मिडिल स्टेज को हमें जीवा हाई स्टेज को जीवा जते बळे सेही भाषागत अक्षरता को पाथर करके हमें अन्य सब दक्षता में हासिल अन्य जो शिक्षागत दक्षता में हासिल तो एठी जो भाषागत दक्षता में होचे मूल आपण को जदि एही पछरे आपण माने देखितबे जो स्कूल गुडा करे बा अभी आपण घर मन करे जदि कि पिला कोन साहित्य बही धरि के बसिथिबो हमरा काहे जो स्किल टा डेवलप करि नै मुसे पे आपण साहित्य बही धरि के बसिथिबो ताको केना लाइक दिस साहित्य बही गुडा कोन धरि के बसछु मैथमेटिक्स पढ़ इंग्लिश पढ़ साइंस पढ़ साहित्य बही गुडा धरि कोन बसछु पुरिचुनी नै आपण माने आपण निजे केबे फेस करिसथिबे करथिबे कि आपण को पेरेंट्स हो हम स्टूडेंट आपण निजे भी कहबो कहिथिबे आमे वी गिव मोर इंपोर्टेंस टू mathematics, science, English, like, but we don't give one position language. एट मूलटी हमर रही गई जदि लैंग्वेज रे के स्ट्रांग में से अन्य स्किल डेवलप करि परबो नै
Because language is the medium of instruction. And language is only the word of mother tongue also. Not English, not any third language, fourth language like only mother tongue. अपन जो मदर टंग को जब स्ट्रांग न करि पारिबे ताले शिक्षागत दक्षता कौन सी बात आगे पारिबो नहीं तेणु एठी मदर टंग को हम केमिति डेवलप करिबा सेति पई आगे जो हिसाब रे जानि नै को आगर ए पर्यंत जो बुक सब हमर सिलेबस सब रहि छ माने सब देखिथिबे टेक्स्ट बुक सब रहि छ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक को विज्ञ लोक माने इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक डेवलप कर मु जानि कोन से फायदा मिले माने मिले का मतलब टीचर कोन कौन फायदा मिलला पिला मन जो अष्टम श्रेणी पिला जो प्रथम श्रेणी पाठ पढ़ी पन तृतीय श्रेणी पाठ पढ़ी पन कौन फायदा को गया इंटीग्रेटेड टेस्ट हमर जदि अलग अलग बुक थांता लैंग्वेज में अलग बुक मैथमेटिक्स में अलग बुक सोशल स्टडी में अलग बुक सुविधा कोन था इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक है जदि भाई पिला को कॉम्पिटेंस लॉस है कि नहीं रीजनल डेवलपमेंट आउ आपण मन जानि जो चक्कर कोन भाई को पिला को चक्कर कोन भाई लगिछ मु जानि कहीं चक्कर आरंभ हो कोठी हक आरंभ हो कहीं आरंभ हो कहीं हम और आरंभ करबा इंग्लिश अल्फाबेट रे ए फॉर एप्पल बी फॉर बैक सी फॉर कैट पढुछथि किंतु हम ओडिया रे आरंभ करिया चक्कर कोन का दस्ता तो मैं आज पर्यंत बुझ पर अपन मन जदि बुझिबे कि कहबे कि कहीं चक्कर पक्ष आरंभ कराइतला किछ अछि कि ना किछ अपन मन करे कोन कब कहले कि कोन तथार्थ चक्कड़ा जेति तार हां नॉन चक्कड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जति हम देखिला जारा मु सुनि जेति माने विज्ञ लोक माना कहतारु हां चक्कड़ा होची गोटे पिलार एक्सपीरियंस लर्निंग देखले तार प्रथम अनुभूति होची चक्कर एवं चक्कड़ा मध्ये लिखिया पई भी ताकू सहज होई सो देखिबो न देखिबो कथा नै आप अल्फाबेट सिखबो अछि ना हैं ठीक अछि आपन कथा मु बुझे आपन गोटे एग्जांपल आपण माने कहि पाते जे ठक लिखिया भी सहज किंतु पिला ठक कले से बुझी किंतु चक कले से देखि चक गड से छोट पिलाडे आमे सगड जदी कहबा अछि भी पिलाडी सगड जानि आज कल पिला माने सगड भी जानि परना किंतु चक जेतु से तार अनुभूति अछि जाके आमे सुनि जे कथा रे हां ठीक अछि तो जस्टिफाई तो करे मोरे पवर देले तेरो सेही कथा पई चकटा को चट मतामत पई धन्यवाद एटा मु सुनिछि आपन कथाटा मत आपन जोटा आपन जो प्रश्न मुचरा उत्तरटा मु जानि जोले भाबु मु से प्रश्न उत्तर जानिछि हेले किंतु केते तो सेटा यथार्थ एटार प्रश्न तार किछ विकल्प नथिले कि हमर विकल्प आउथिला कि बुझ पड़ो नै मु कहया पई चाहूछि बुझले कि तेणु हमको हमर जो बनोबद जो करा एबे जो देखन काई जदि चक्क को वही ठीक गेला त बनोबद काई पब्लिश के ऊपर दिया हला एबे देखिबे गवर्नमेंट हमर जो वर्तमान गवर्नमेंट सब बनोबद भाई पठेले स्कूल को पठेलो नै कि कोन भाई पठेले तो से वही सब ठीक था नहीं कोठी ना कोठी व्यवस्था रे भूल रहिछि बोली अब आज स्थिति में अछंती ताको हमको स्वीकार करियो को पड़े बुझ पड़तो नै नै कौन है पर एटा भाई पर हम नहीं थे पर जब हमर जो लिटरेसी सर वेलकम प्रोफेसर अविनाश नायक रीजनल डायरेक्टर इग्नो so please sit down So I was saying that definitely there must have been certain defects in our system for which we are lacking the literary competence. Those exact competencies of the elementary level are not exactly echoed by the student. There must be certain defect in our system. There may be certain defect in our teacher also, isn't it? And somewhere in our family also. I mean, our family with that is a problem. There are अनेक सब तरह के reason हमें करियो तो ताको सुधारियो को नहीं तो ये होची हमर लिटरेसी के प्रॉब्लम होची सेमते न्यूमरेसी मध्ये प्रॉब्लम रहछ आपण माने सब जानि देबे मु आपन को आपन प्रश्न पूछे अपन देखा रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक तीनटा आर रहले क्लियर रीडिंग राइटिंग का विषय देले लिटरेसी और न्यूमरेसी करे सेकेंड सेटा ठीक है नहीं अच्छा ये जो लिटरेसी स्किल और न्यूमरेसी स्किल क्या भितर बेसी इंपोर्टेंट व्हिच वन इज important between these two literacy and numeracy ठीक है literacy नंबर को चुके पेज ले जाए अरे almost all
You are saying literacy is most important. What about numeracy? Numeracy is not important. According to you, numeracy is not important, literacy is important. Both are important. I am asking you which one is more important. More important. Okay, listen. So then, without the numeracy, can we survive? No. Can we survive? Eh? Without the literacy, you can survive. But without the numeracy, you cannot survive. That is what I am telling you. ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଟାଇମ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମା ଆମର ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆজ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ଦରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ନ୍ୟୁମରସ୍ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିବେ କେତେ ରହିଲା କଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଘର ତିଆରି ସବୁଥିରେ in every walk of life you have to apply the skill of numeracy and without numeracy you cannot exist and you must have find some people those who do not have the skill of literacy लोग बुद्धो जल्दी आदिवासी लोग आ रहे हैं किसी पढ़ा लिखा किसी नहीं किंतु हिसाब पता जानते कि नहीं हिसाब पता जानते कि नहीं दिल्ली में बोलो से दिल्ली जाओ जी काम करिए पे कितने पैसा पहुंचे कितने दर पहुंचे कितने सेविंग पहुंचे हिसाब पहुंचे कि नहीं से नहीं किंतु से लेखा पढ़ा जाने যদি সেটাকে হিসাব করতে জানি জানতা তার লাইফটা কেমন যেতাম না রাইট হইতো বুঝতে so this is how this numeracy is also more important than literacy numeracy you can say both are important I also admit both are important both are very much essential but numeracy is comparatively in our practical life it is more important কিন্তু সেই নিউমেরাসি অলসো নেগলেক্ট হয়ে যাচ্ছে যেটা আপনারা কইছেন ଆମ সিস্টেমটা দেখুন কোড ভুল রয়েছে আমি প্রথম পিলাକୁ শিখাইলা আমরা গাইডলাইন অଛନ୍ତି আপনারা মানে ঘরে ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଗେ ନମ୍ବର ଶିଖେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ ନମ୍ବର ପରେ ସଲା ତାପରେ କଣ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବରାବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାପରେ ନିଶାନ ହେଲା ଏହା ନା ନାଇଁ ଇଜ ଇଟ୍ ଦ ରାଇଟ ୱେ ଇଜ ଇଟ୍ ଦ ରାଇଟ ୱେ अरे आगे मल्टीप्लिकेशन जो होने के लिए कौन दैट इज मल्टीप्लिकेशन सब पर एसिड एडिशन सब्ट्रैक्शन हैं यार पोटेंशियल तो प्रोडक्ट रही है ना तो फर्स्ट एडिशन विल कम देन सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन isn't it but we are treating in a different way नहीं जब तापर पड़ी कौन होची जदी पिला पड़े के न सिखलो जदी मिसअंडरस्टैंड न सिखलो बाजार खराब नहीं तामने पिला दिननु कोन करा होची न्यूमरेसी के गोटे माने जो मैथमेटिकल स्किल को गोटे वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी डिफिकल्ट स्किल बराबर पिला माने परसीव करथन सो दिस सॉर्ट्स ऑफ परसेप्शन इज वेरी डेंजरस पोटेंशियल very dangerous but both may be in long future what happens the student they particularly elementary level in the higher level also they cannot acquire higher numerical competency. This is the problem. And mathematical phobia, you must have heard the word mathematical phobia. The people are having mathematical phobia. Mathematical don't think about. ठीक है नहीं सर अपन मैंने कौन just please respond to me. तो एवढे भाବରେ mathematical phobia मध्ये हम पकड़े कुछ कुछ देखिए mathematical हमारो एवढे तो हमको कौन करेगा हमार किसी भूल अपन मोर कहवा अर्थ बुझ पड़ लेकिन हमको किसी रॉन्ग वे हमने जाइए जो दिमाग की समस्या की होती नहीं तो हमको तो सॉल्यूशन बड़ी तो सॉल्यूशन मते समय देदरे मते बड़ी तो सारे में पड़ियो अच्छा ठीक अछि तो सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन पार्ट को ठीक हम आखे कर रखी किसी सॉल्यूशन हमको जो मैथमेटिक्स न्यूमरेसी पाइले अपन माने सुने थे ट्रेनिंग करके निश्चित भाग कोटी कहै को से हमको जोटे आरंभ कराउ जे नंबर इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ न्यूमरेसी बट इज द बिगिनिंग इज अ प्री नंबर सिस्टम प्री नंबर कांसेप्ट नंबर पूर्व को प्री नंबर अछि समझ में आइडिया अछि के बाबू ने हैं प्री नंबर सिस्टम व्हाट इज प्री नंबर सिस्टम देयर आर स्लैंटिंग लाइन गोटे राइट लेफ्ट स्लैंटिंग ओवर डाउन में हैं हाइट वेट हेवी लाइट सो दीस आर प्री नंबर concepts I mean we should have to start from this pre number concept then we'll start from number system
एंड नंबर सिस्टम को जानिला बेले हमको हमें कह दो सपोज 1 2 3 4 5 नंबर पिला मन स्टार्ट करछन किंतु can you think that they really visualize what is this number, what suppose 5, so what do you mean by this 5? ସେମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି 5 କହିଲେ କଣ ଅର୍ଥ କଥା ସେ ସବୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପରସିଭ କରୁଛି କି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ এটা 5 ଟା ବୁଝି କଣ এটা 5 ଟା 3 2 ଏମିତି ସେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଉପାୟ ନାଇଁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବେ ନମ୍ବର ସହିତ ପିକ୍ଚର ଅଛି ନମ୍ବର ଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ ନିୟମରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଏ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟାକୁ ଗୋଟେ ଫନ୍ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ପଡିବ mathematics classes mathematics computational form then ପିଲାମାନେ feel କରିବେ mathematics is also an enjoyable subject we can also derive pleasure out of this mathematics classes and a mathematics teacher will be a very interesting person mathematics सारा असर भारी करो पिलांको अपन मैंने जो स्कूल लाइफ रे दिखला नहीं mathematics सारा भारी करो ए लोक भारी डिफिकल्ट ए भाबरे हमर परसेप्शन होई छी कि mathematics लोक केते लाइक करन very good like say you माने थोड़ा हमको करेगा mathematics teacher will be a very interesting person very lovable person say type of image हम भीतर क्रिएट करेगा कारण हमें कला माने फिल्म माने एंजॉय करबा हम क्लास सेटा को देखो तेबे हमर न्यूमरस रो फाउंडेशन सेट करी आ जदि थोरे न्यूमरस रो फाउंडेशन तैयारी हे गला आ लिटरेसी रो फाउंडेशन थोरे जदि फिल्म को भीतर तैयारी हे गला से निश्चित भाव से फिल्म को जो न्यूमरस लिटरेसी फाउंडेशन रे ताको किसी दक्षता के ताको और करीब निश्चित भाव का जो मिडिल लेवल एप्रिकॉन लेवल हायर लेवल तो दक्षता अधिक विकसित है तो हमको टीचर हिसाब रे तो बहुत दिन से कहया पे मु चिंता करथि सु आगु पछे टिके आलोचना करबा मु आपन से इंटरैक्ट करबे एमटी भाषण रे नहीं हां आमे मु आपन से इंटरैक्ट करबे अन्य सेशन से तेणु तो आपण मन एतिकी खाली कहया पे चाहूँ आपण सब मन हां ठीक है बस जस्ट और सब लोग जो टीचर्स अथन हम मन स्वाधीनता दिया ठीक ना हमें टीचर माने हम मन को हमर हाकिम आ जणे जस्ट हम सारा विषय पर टिके पूर्ण कथा हो हमर डीओ सांस से कथा हो हम मन पॉलिसी मेकर और अन्य लोक माने होछन हमर एडमिनिस्ट्रेटर लोक माने होछन एजुकेशनिस्ट के बा टीचर के बा एजुकेशन को भलो पातो लोक माने होछन हमर को पर्सनलाइज करा दे हमको सब बड़े प्रेशर में तो किसी तुम एतिके बड़ा सिलेबस कंप्लीट करो न लेकिन तुमको पनिशमेंट हो नहीं सिलेबस चक्कर नहीं सिलेबस कंप्लीट करबा चक्कर रे हमें हमर पिलांकर प्रति दायित्व हम भूली जाइछु एवं पिला दायित्व भूली जो कोन कोन होची पिलांकर आंतरिक तंत्र रहबा से मते कम हो जे पिलांकर फाउंडेशन पद्य ये सब तो आउट कारण तेणु ये सब को हमको दृष्टि देबको पड़िबो भविष्य रे तेणु आपण माने आज जो सेमिनार को आसीचंती जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरसी स्किल को डेवलप करायो से संबंधित आलोचना हबो तेणु आपण माने किछ शिखिबे एवं निश्चित भाव रे आपण को क्लासरूम रे तो अप्लाई करिवे एवं पिला मन को फाउंडेशन को आपण माने स्ट्रांग दिस इज माय थैंक यू Thank you, sir. With dignity and grace, you take our place. A shining star that lights up our space. Your achievements inspire and hearts beats as one. We are humbled by your presence beneath the radiant sun. Thank you, guest of our honored sir, for making this day on. Sometimes the word is only. बंधुगण आम घर बर्तमान उपस्थित अच्छा डॉक्टर अभिलाष नायक रिजनल डायरेक्टर इग्नो सार को उद्देश्य गोटे बड़ ताली हो जाऊ टे मु अनुरोध कर गुरु छात्र छात्री मानक सार को संबोधित करेंगे आम गुरु छात्र छात्री वृंद सापलिंग उपटोकन टी आणतु भितर को सार को आम सार को उद्देश्य टे समस्त छिड़ा मिलवा टे
Thank you, sir. ଆମ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଜିଓ ଅଲିପୁର ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଅଲରେଡି ପ୍ରଫେସର ଅଲରେଡି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ନିଜର ସେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। शुभ अपराह्न जातीय सेमिनार एफएलएन उपलक्षे चंडीपदा ठारे जो बैठक आह्वान करा जायछि ए उत्सव सेमिनार सभापति बंधु विक्रम बाबू जे कि एटी समस्ते निज निजर प्रतिभारे देदीप्यमान मदन बाबू डायटर अन्य शिक्षक प्रशिक्षक तथा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नवकृष्ण चौधरी शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान आसीथिबा सानुज तथा बंधु पूर्ण बाबू एवं सबुठारु सम्मानस्पद रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक महोदय एमाने समस्त होउछंती जणे शैक्षिक चिंता चेतनार विभस्व मध्याह्नर मार्तंड आज परिप्रेक्षी रे एमानकर उपस्थिति रे जो माने कि शैक्षिक चिंता चेतनार उद्वेलन भितरे सत्यर निर्यास खोजुचंती मो साधुवाद दउची ये नेशनल लेवल सेमिनार को ऑर्गेनाइज करिथिबा प्रतिष्ठान अध्यक्ष महोदय को सहकर्मी मानू एवं एथिरे भाग नौथिबा मोर शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी टीचर पीपल्स गुरु छात्र छात्री मान आज जहाँ प्रसंग अच्छी आपण मानकर एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमको प्रथमे नोमेनक्लेचर को बुझा पड़ो या देरे प्रोफेसर डॉक्टर दे जहाँ कहते चारिटा जो कंपोनेंट अच्छी ईसीसी टीचर एजुकेशन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन लास्ट आउची फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन एटी जो शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी माने अछंती एमाने इम्प्लीमेंटेशन साइड रे अछंती तेणु इम्प्लीमेंटेशन साइड रे काम करिबा पूर्वरु स्ट्रक्चर विषय सार कहिसंती बार यार स्वरूपटा कोन यार आभिमुख्य कोन किभली भाबरे आमे याकू इम्प्लीमेंट करिबा से पार्टटा बाकी रहि जाईची परवर्ती पर्याय आपण माने एटी जो अछंती साधारण कर्मी माने रिसोर्स पर्सन बा हमर रहिचंती एक्सपर्ट्स से माने आपण मानकू अवेयर करिवे तबे सो फार माय नॉलेज गोज
unless and until a strong foundation is not given, we can't construct a building. Foundation माने कौन आपण मन बुझुन आपण माने समस्ते शब्द कान को भलो सुबुची बोली कहउछंती फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मौलिक भाषा और शिक्षा संख्या ज्ञान से मौलिक नुह जहाँ आपण कहउछंती मूल दुआ जो छोट पिलाटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे जहाँ को इंट्रोड्यूस करा जाउची एथिरे मूल दुआ प्रकृत रे होउची छोट पिला ओरिजिनल बेनिफिशियरी होउची पिला आगुरु आपण माने 6 प्लस रे एडमिशन करथिले क्लास रे ता पूर्वरु अंगनवाड़ी रे पिला पाठ पढुतिला 5 प्लस पर्यंत एबे समय आसीची पिलार 3 वर्ष ठारू 9 वर्ष पर्यंत एफएलएन कार्यक्रम नवार व्यवस्था करा जायछि ता माने 3 वर्ष वयस रे जो पिला आसीबो आपण मानक पाखकु पाठ पढिबा पई प्रथमे तार सोशलाइजेशन दरकार 3 वर्ष वयस रे से बाप मांक पाखरे जहा करूथिला बाप मां ता पई जहा करूथिले बाप मांकर कंट्रीब्यूशन जहा थिला आपण मानकर भूमिकाटा जदि बाप मांकर भूमिका ठारू आलिवरिंग हबो अट्रैक्टिव हबो तेबे से आपण मानको आगे ग्रहण करिवो तेनु देयर शुड बी ए रैपोर्ट सोशल रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड ए टॉट सेठी आपण आ तार टीचर बोली निजुको भाबिबे नाही यू आर द फादर यू आर द मदर सोशल रैपोर्ट दरकार जेमिति बाप मां ताकू दउचंती चॉकलेट दउचंती खाइबा को दउचंती झाड़ा परिश्रा कले सफा करूचंती ए कार्य आपण माने ही करिवे ता अर्थ unless and until a teacher is acceptable by that child of 3 years or 4 years he can't be a good teacher आपण से पिला द्वारा ग्रहणीय हवा दरकार स्पृहणीय हवा दरकार आपणकर व्यक्तित्वटा को से ग्रहण करवा दरकार से पिला मूलधुआ एइटू पड़िबो बापा हाथ धरिकी नेला बेले जेमती देखौतिला एटा कुकुर से कुकुर कहि पारुनी से भोग कहउछि एटा भात से भात कहि पारुनी हाउ कहउछि बिलेई कहि पारुनी मियाउ कहउछि एइटी बापा ताकू कहबो बा मां ताकू कहबो सेही प्रचलित भाषा बा कोल इक्वल लैंग्वेज रे बुझेइबा को पड़िबो भाषा एइटू आरंभ हो वर्तमान तो समय है छोट पिला जन्म हला परे बाप मां मोबाइल धर दउछु से कार्टून देखुछि मोटू पतलू देखुछि हाथी राजा देखुछि से कथा होउछि का संगे पिला संगे इंटरैक्शन बाप मां केते समय करछु जदि बाप मां को समय नाही पिला संगे इंटरैक्शन करिया पई तार कथा कहिबार बाक शक्ति को बढ़ेवा पई ताला अन्य किए समय दबो जहा आपण मानकर सर्वे हेची जे पंचम श्रेणी रे पढुथिबा पिला साहित्य लिखि पारुनी गणित गुणन खंदा जानिनी मिश्रण जानिनी ये होची प्रॉब्लम तार स्ट्रैटेजी ता तयार करिया पई एफएलएन ता तयार करा जाईची किंतु हाउएवर जदी रियलिटी की जीवा जहा निराट सत्य आ विराट वास्तव ताकू हमकु ग्रहण करियो जो छोट पिलाटी विद्यालय को आसीबो बा आपणको पाखो को आसीबो से आपणको ठारू प्रथमे भाषा शिखिबो किबळी भाषा शिखिबो तार सेही जरोटी भाषा रे से शिखिबो काहे की ना वर्तमान आउ अजाई गीत गाई की सुनाउछंती की
ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରି ନା ତମକୁ ବସିଛି ଖାଉନି ମା ଗୀତ ଗାଇକି ଆଦନ ମାମୁ ସରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କାହିଁକି ଗାଉଥିଲା ବୁଢୀ ମା ବା ଅଜା ଆଈ ଏମାନେ ଗପ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ଭାଷାର ଯୋଉ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ଶୁଣିବ ଅଧିକ ସେ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବ ଅଧିକ ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା କହିବେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ କାକଟି ଉଡୀୟମାନ ଅଛି ସେ ବୁଝିବ ବୁଝିବ ସିଏ ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଯାହା ସେ ବୋଧ ମାନେ ତାର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହବ ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ ହୁଏତ ସେ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଇପାରେ ଡାମରା କାଉରେ ଡାମରା କାଉ କଣ ଉଞ୍ଚ ପର୍ବତ ବୋବାଉଥାଉ ଉଚ୍ଚ କେହି କହ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଅଜା ଆଈ ଗାଉଥିଲେ ଉଞ୍ଚ ପର୍ବତ ବୋବାଉଥାଉ ଉଞ୍ଚ ପର୍ବତ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ତହିଁରେ ରହିଲେ ତିନି ମଞ୍ଜିଆ ତିନି ତିନି ପଣ 18 ପଣ ଏ ଗୀତର ଅର୍ଥ କଣ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଟା ଶୋ ନୁହଁ ସୁଅ କିନ୍ତୁ ତାଳ ପ୍ରତିପାତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ପିଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ଗପ ଯୋଉ କୁହାଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ କୁକୁର ଚଲାଏ ସାଇକେଲଟି ଭାଲୁ ଖେଳଇ ଦୋଳି ହାତୀ ପିଠିରେ ବାଘ ବସିଛି ବାଘ ପିଠିରେ ଛେଳି ଇଏ କଣ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଆଉ ବିରାଟ ବାସ୍ତବ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମର କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଯେ ଚକ ସିଏ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ କଂକ୍ରିଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଟା ଯାହା ସିଏ ଦେଖୁଛି ପତ୍ର ଦେଖୁଛି ଗଛ ଦେଖୁଛି କୁକୁର ଦେଖୁଛି ବିଲେଇ ଦେଖୁଛି ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଦେଖୁଛି ସେଇଗୁଡାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଭାଷା କହିବାକୁ ପଡିବ କଂକ୍ରିଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଥିଓରି ଅଛି ଜନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଥିଓରି ତା ଦେହରେ ଅଛି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେଶନାଲ ପିରିୟଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ସେ ଦେଖିବ ସେ ସେଟା କହିବ ନ ଦେଖିବା କଥାକୁ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଷା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛି ତାରି ବିଷୟରେ ସେ ଆଗେ ଜାଣିବ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେଶନାଲ ପିରିୟଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଇମାଜିନେସନ କଥା ଆସିବ ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଥା ଆସିବ ଅନେକ କଥା ଆସିବ ତେଣୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା लिटरेसी बा लिटरेचर बा भाषा यार विकास को आपनको गुरुत्व दबा को पड़िबो पेडागोजिकल डेवलपमेंट हेले भी जहा मूल आधार जहा बेस से बेस को आगे आपण माने मजबूत करबा को पड़िबो जो भाषा रे पिला कहि परिबो जो भाषा रे पिला पढ़ी परिबो लेखि परिबो सेही भाषा रे ही ताकू सिखा बस सही आमे कहू जे जदि केंद्रापड़ा आड़ को जीवे से कहबे कति के आइलु टिके बरहमपुर आड़ को गले से कहबे डेबरी कानी खाइला कानी बा लेफ्ट राइट ना कोन जाजपुर रे कहबे खाइमी जिमी सोइमी ना कोन जगतसिंहपुर निमापड़ा एपट साइड रे जदि जीवे से कहबे खाऊंची पीऊंची जटन टू आरंभ करी बोलगड़ नयागढ़ आड़ को गले जदि भुवनेश्वर जाऊ टिके मंत्री पाखे बाजी आसबू तेणु नईके बाग देश के फान तेणु भाषा विभिन्न अंचल आंचलिक माने सही साहित्य भाषा माने आमे जहा को भाषा बोली कहूचे
लिखित आकार रे समस्त पई समान किंतु कहिबा आकार रे अलग अलग आपण माने भात कहउछंती ट्राइबल लेवल रे कहउछंती मांडी आपण एठी जानिथिबे ओडिया ओडिया रु पडी गजा बोली कहउछन तो ओडिया देखछंती ना नै हैं पोड़ो बोली कोन पोड़ो 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 देखिछंती पाଳ देहरे हां बिहन सब संरक्षण करा जाए तो पोड़ो कुआ सोडुओ देखिछंती सोडुओ जंत जंता जंतु देखिछंती एरा आउट ऑफ मशीन एने जदी बैट कथा कहबे जानिछु हमें 0 पॉइंट कोन हमें जानिछु नै कि ईमेल कोन हमें जानिछु आउ सगड़ नाही तेणु जहा धीरे धीरे लोप पाई जाउची से विषय वस्तु को वर्तमान ऐड न करी वर्तमान जहा आसुची क्रिकेट कथा कहले हमें जानि परिबा बैट बॉल विकेट स्टंप इत्यादि एक कथा बुझी परिबा चैनल कथा कहले हमें जानि परिबा ईमेल कथा कहले जानि परिबा डबल स्पेस कोन कहले जानि परिबा दिस इज द क्राई ऑफ द टाइम ये समय रा आवाज तेणु सही पई ए नेशनल बा न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे शिक्षार नव उन्मेष करिबा पई नव जागरण सृष्टि करिबा पई पारिपार्श्विक अवस्था को नेई हमको भाषा सृष्टि करिबा को पड़िबो बा भाषा रे परिप्रकाश करिबा को पड़िबो पिलार भाषागत ज्ञान को मजबूत करिबा को पड़िबो आपण जेबे पढुतिले दीर्घ 40 वर्ष पर्यंत आम जानिबारे से चक कळ नळ नख अरट चक चकी माछ माछी ना नहीं ये सब थिला काहे की थिला ना अल्फाबेट ओडिया रा वर्णमाला एई भली भाव रे सृष्टि करे देउथिला अक्षर पढिला परे मात्रा पिला शिखुथिले वर्तमान पिला मानकर रिसेप्टिव कैपेसिटी जा कहउथिले डॉक्टर दे जे एडाप्टिव असेसमेंट वर्तमान पिला मानकर मेंटल एज आम मानक ठारू यथेष्ट एडवांस आपण मान निश्चित मानिने तेणु एई बळी एडवांस्ड मेंटल एज रो पिलांकु आमे जेते बेले सिखेइबा बुझेइबा कुहाइबा ता पूर्वरु आमे कहिबा जदि आमे प्रैक्टिस करथिबा कहिबा आमे जदि जानिथिबा कहिबा गुड कंक कोन कहले ओडिया रे राव को शब्द न ओडिया गुड कंक ए शब्द सुनिछन्ति ना सुनि नांती पढिछन्ति ना पढि नांती पढिछन्ति रामचंद्र रे संध्या पढिछन्ति ना नहीं बहु बालिवंत डेई हे आदि आसीछ चली सही कत नदी गर्भे पसी होइछ पारी नव गुड़ कंक लतिका केते माडीछ परा पढिछ ना नहीं पढ़ी ना आपण माने पढ़ी देखि थाई न पारंती कारण समुद्र कूल रे जो माने रही जंती समुद्र रो जो बाली बंत सब थाए से बाली बंतरे मोटा मोटा घास सबाई घास भलिया मोटा मोटा घास सब माडी थाए आपण देखि से घास गछ देह रे कदम फूल भलिया गोल गोल फूल सब फुटे एटा बाली रे सब पोती हेकी थाए ता कंटा गुडा सब ऊपर पड़े माने बाहरी बाहर थाए बाली रे चला बेले सेबडा गोडे रे सब बाजे बुझ पाइले पवन आइले बाली उड़ी गले से फूल गुडा के सब भांगी की ऊपर उड़े समुद्र कूल रे पिला गोडे की धरंती सेटा अछि गुड़ कंक छाड़ंतु से मो कहवा कथा होची ओडिया भाषा रे अनेक
रस रही एवं प्रारंभिक शिक्षा पाई पर्याप्त सुजोग अछि तेणु जहाँ पर्याप्त सुजोग अछि सांप्रतिक परिवर्तित समाज रे ताकू प्रयोग करी आमर से भाषा को बढ़ेबा को पड़े पिला को शिखेबा को पड़े 3 वर्ष रु 9 वर्ष पर्यंत जो पिला आपण मानक पाखरे रहिबो ता सहित माने एक सौहार्द्यपूर्ण वातावरण रे निजर पुओ झियो मने करी निजर पुओ झियो ठारू अधिक मने करी तांकर दायित्व नै किभଳି भाबरे तांको आपण भाषा शिखेइबे सेटा होची आपण मानक ऊपर निर्भर करू जेहेतु आपण माने इम्प्लीमेंटेशन साइड रे अछंती क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन माने कोन क्रियान्वयन ये एफएलएन रो 5टा स्टेप गोटे एनालिसिस सिंथेसिस गोटे डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट असेसमेंट बा इवैल्यूएशन 5टा स्टेप एथिरे अछि आपण माने पढी जंती ये होची पेडागोजिकल एक्सप्लोजन जो शिक्षण तत्वर परिप्रकाश होची परिवर्धन होची विस्तार होची हमको एनालिसिस विश्लेषण करी देखिबा को पड़िबो पिलार आवश्यकता कोन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू लर्न what the child wants to have for development of his literary skill or his language skill से कथा कहबो तार वाक क्षमताटा बढ़ू कहिले तो गुडे कथा से सुनिले कहिबो अधिक सुनिबो कहिबो जहा कहिबो ताटो आउटिके कम पढिबो जहा पढिबो ताटो आउटिके कम लिखिबो ए चारिटा प्रक्रिया लिखित प्रक्रियाटा होची जटिल प्रक्रिया दीटा जिनिस आपण ताकू केते अधिक कथा कहिबे इनोवेटिव आपण मान कर दिया जाई इनोवेटिव क्लासरूम प्रैक्टिस फॉर अटेनमेंट ऑफ एफएलएन गोल कोन लिटरेचर रे बा लिटरेसी रे पिला को आपण केमती स्ट्रेंथ माने स्ट्रांग करिवे ताको मजबूत करिवे तेणु प्रथमे ताको आपण ऑब्जर्व करिवे केस स्टडी भलिया पिला केते ग्रहण करि परिबो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को तापर अकॉर्डिंगली यू डिजाइन आपण डिजाइन करिवे प्लान करिवे मेटिकुलस प्लानिंग आ जदी आपण मेंटली रिटार्डेड सेरिब्रल पॉलिसी पिला को जाई कि कहबे एक ऑल एक बी लेक 1 2 गण से करिवो तेणु पिलार इनटेक कैपेसिटी के आपण आगे एनालिसिस माध्यम रे जानंतु साइकोलॉजी माध्यम रे जानंतु तार ग्रहण करिवार सामर्थ्य केते अछि डिजाइन कला परे आपण इंप्लीमेंट करिवे तापर आपण मानकर प्रयोग करिवे ना ए पिला एतिकी ग्रहण करिवा को सामर्थ्य याकू 1 टू 10 पर्यंत कहले होनी 1 टू 3 पर्यंत म आगे कहि इंप्लीमेंट करिवे क्रियान्वयन आपण माने ए स्टेज रे अछन बा आपण मान को ए दायित्व दिया जिवो इंप्लीमेंट कला परे देखिबे केते प्रोग्रेस होउछ डेवलपमेंट होउछ प्रगति केते होउछ प्रति अंतर रे किछि समय अंतर रे बा किछि दिवस अंतर रे किछि मास अंतर रे आपण शेष रे असेसमेंट करिवे बा इवैल्यूएशन करिवे मूल्यांकन तेणु ये दायित्व आपण मानकरे ऊपर रहिबो तेणु मोर आपण मानकु निवेदन पिलार भाषा ज्ञान को वृद्धि करिवा पाई उभय प्राचीन सांप्रतिक बा आधुनिक अत्याधुनिक भाषा जहा रही जहा द्वारा से अभ्यस्त हेई परिबो तार सामर्थ्य को नहीं आपण ताकू सिखेबा को पड़िबो भाषा शिखिले न्यूमेरेसी आपे आसीबो टुआ टुई भाई भौणी आनिले चाउल चुना बिरी बाटिले चकुली गले कहिले चटिया होना ना कोन
कबाट खोली देखिला टुआ बागमा डाकिला टुआ बागमा मुहे आस चकुली चीनी चटणी खाई चौकी ऊपर बस ये होची संपूर्ण भाव रे अवास्तव एब्सुर्ड किंतु आपण आ कहबे ना एटा अवास्तव तार श्रुति मधुर सकाशे ताको एभली गीत आमे सुनो ता मन भुलेबा पई मोटिवेट करबा पई आमे भाषा प्रयोग करू जेतेबेले से चौकी कथा कहबो चौकी रु आपे आपे से देखिबो चौकीटा कोथरे दिए जेतेबेले से जानिबो आपण ताकू चिन्हे जेटा चौकी एटा टेबुल एटा बाड़ी एटा अलमीरा इत्यादि कथा जो चिन्हउचंदी सेठी से चिन्हिबो चौकी आपण कहि सारिबा परे जदि से आपण को प्रश्न कला बा ता सहित आपणकर भाषागत एक्शन रिएक्शन इंटरैक्शन हला तेबे जानिबे तार रिसेप्टिव कैपेसिटी बढ़ुची सेठी से जानिबो न्यूमेरेसी एटा गोड़ो केतेटा गोड़ो अछि गण एटा मियाऊ देख तार केतेटा गोड़ो अछि तेणु भाषा मजबूत होबा दरकार भाषारू गणित ज्ञान आपे आपे सृष्टि हबो आपण मानकर जो प्रथम श्रेणी रे पढ़ा होची हस खेल बही ता भीतर केते परसेंट भाषा अछि केते केबे एनालिसिस करछथि 55 आमे जति एसेस करछु कहू आपण जति एसेस करी बाहर करि फेरि आउरी भलो कथा इंटीग्रेटेड जेतु ना 55% लिटरेचर 25% एनवायरनमेंट 20% मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड तेणु एई बळी जदि तृतीय श्रेणी पिला ठारू 9 वर्ष बयस पर्यंत बा तृतीय श्रेणी पिला पर्यंत 3 वर्ष रु 9 वर्ष पर्यंत पिला माने आपण पाखु आसीबे आपण माने भाबंतु आपण मानकर दायित्वटा केते अधिक हबो तार सामाजिक स्थिति तार सुरक्षा तार खाद्य पेय तार चाली चलन आचार व्यवहार ये सबुरे परिवर्तन आनिबार गुरु दायित्व आपण माने नेबे तेणु मु आशा करूची एडी जो शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी माने अछंती एमानकर सकारात्मक मानसिकता रहिबा दरकार अंगीकारबद्धता रहिबा दरकार एवं ए कार्य को निष्पादन करिवार दृढ़ संकल्प रहिबा दरकार आ सर्वोपरि जेते पिला आसीबे 3 वर्ष रु 9 वर्ष बयस भितरे बाछ विचार न करी निरपेक्षता अवलंबन करी श्रृंखलित मार्ग रे किभଳି भाबरे एमानकर लिटरेसी आ न्यूमरेसी के हमें बढ़ाई परिबा सेति पय हमें यत्नवान हवा दरकार तेणु मोर मने पड़े गोटे कथा एति पय निजे परिश्रम करिवे नैतिकता रखिवे श्रृंखलित हेबे एवं विवेक अनुमोदित कार्य करिवे हेले जाई आज जो नेशनल लेवल सेमिनार आपण माने अटेंड करूछंती यार आउटपुट नो आउटकम आम पाखे निश्चित पहुंचबो मु शेष रे गोटिए कथा आपण मान को कहिबी बिना श्रम यत्ने होईछि के पार दुस्तर अनंत भव पारावार नैतिक साहस होइण साहसी कर्तव्य रूपिणी तरी परे बसी विवेक आहुला निरंतर मार तेबे भव सिंधु होई जीवो पार तेणु एफएलएन कार्यक्रम को आमे जदि इम्प्लीमेंट करी देखैबा को चाहूचे हमको परिश्रम करबा को पड़िबो त्याग करबा को पड़िबो नैतिकता रखिबा को पड़िबो सर्वोपरि विवेक अनुमोदित कार्य करबा को पड़िबो कॉलेज आई ए जो एफएलएन संपर्क रे आपण माने ट्रेनिंग नौजोदी ये ट्रेनिंग रो आउटकम जिल्ला रे निश्चित भाव रे फलप्रद हबो प्रभावी हबो एथिरे संदेह नाही समस्त को धन्यवाद वंदे उत्कल धन्यवाद सर
सर बहुत सुंदर भाव निजर अभिभाषण प्रदान करी आम समस्त को अभिप्रेत करछंती सांको दिस गोटे आउ गोटे बड़ करताली टिके जाऊ सर आपन पर दुई लाइन टिके respected sir a dignified guest honoring us with your estimate presence best your wisdom and knowledge we humbly adore a guiding light that we eagerly explore thank you sir for blessing us with your noble quote thank you sir सांकर बहुत कार्यव्यस्तता सत्वे सर आम घर उपस्थित रही आमको एते समय अभ्यास कले एवं आमको अभिप्रेत कले सेति पई आमे प्रतिष्ठान तरफरु एक बड़ करताळे दे सर को धन्यवाद अर्पण करूछु एवं या सहित मते आशा करूछु आमे जे सर आगामी दिन रे मते आगो को आसी आमको अभिप्रेत करिवे एवं धन्यवाद सर आपन आगमन को आमे पुनश्च अभ्यास रे रहिबु थैंक यू सर समस्त आमे के छिगाई पड़ी काटी दे सर को सम्मान करते सर नमस्कार सर बहुत मेलापी एवं साहित्य रे सर ज्ञान तो गभीरता समस्त जानिछंती सो सेकरू हम पाइ गोटे सुযোগ आमे समस्त जे स्थान ग्रहण करिबा वर्तमान आम घर उपस्थित छंती डॉक्टर अभयास नायक रीजनल डायरेक्टर इग्नो एवं सार मध्य जने बहुत गुणी ज्ञानी व्यक्ति रूपे आमर परिचित छंती एवं सार को पाखरु मध्य सुनिया पे आमे समस्त व्यग्र छंती वर्तमान आमे हां दो छात्र माने टिके आमे निरपता रक्षा करिबा गुरु छात्र माने आमे निरपता रक्षा करिबा बुझिबा टिके हमर शिक्षक बंधु अनुरोध रहउछि जेते आपण सब सुनुछंती ताकि नोट डाउन सब करिबे एवं ता आपण पय निहाती रूपे जेते आपण घर को जिबे निहाती ताको ता आपण को निहाती प्रेरणा जोगेबो वर्तमान मु अनुरोध करूछि डॉक्टर अभ्यास नायक रीजनल डायरेक्टर इग्नो महोदय को से निज अभिभाषण प्रदान करिवे थैंक यू सर समस्त को नमस्कार सर्वप्रथमे मु डाइट चंडीपदार प्रिंसिपल श्री विक्रम साहू सर मु धन्यवाद देबो चाहिए एते सुंदर ओके टॉपिक सेमिनार जो रखाई छ हमरो इनोवेटिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर अटेनमेंट ऑफ एफएलएम गोल्स एते सुंदर टॉपिक ऊपर नेशनल सेमिनार रखछंती आ एठी जो टीचर माने हमरो उपस्थित अछंती मु भाबुची आपने सब स्कूल लेवल अच्छे ना कॉलेज लेवल भी अच्छे पार्टिसिपेंट जो माने स्कूल लेवल वेरी गुड बर्तमान नेक्स्ट करिया चाहिबी हमें केते जण हम प्रोफेशन को नेकी गर्व करू वेरी गुड बहुत बढ़िया लागिला मु काई कहूची एक कथा मु टीचर ट्रेनिंग सहित अनेक वर्ष धरि माने कंटीन्यूअसली एसोसिएटेड हे की रहिछि हला मुझे तो कोरापुट रे थिले रीजनल डायरेक्टर 12 वर्ष मो सहित ओडिसा सरकार को दुईटा जाक डिपार्टमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन एससीएच डिपार्टमेंट दुईटा जाक डिपार्टमेंट रो प्राय 2000 टीचर हमें इंग्लिश रे मैथमेटिक्स दो विषय हम सब डिस्कशन करू छ इंग्लिश रे मैथमेटिक्स रे आउ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग तीनटा सब्जेक्ट में हम ट्रेनिंग देइछु पिला टीचर मन तापरे मु या पूर्वरु जोठी मु थिली इग्नु को आसीबा पूर्वरु दैट वाज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश पांचटा स्टेट रो इंग्लिश टीचर मान को हम ट्रेनिंग ए जो पीरियड भीतर मु जतो टीचर मान से इंटरेक्शन करे किछि टीचर कहंती जे मो दुखी हमको ठीक रे दरमा मिलुनी हमको प्रमोशन होनी ये होनी से होनी लेट मी टेल बिफोर ऑल ऑफ यू दैट आई feel myself proud to be a teacher. Thank you.
I belong to a family of teachers. मो बापा जने हाई स्कूल टीचर थिले 2002 रे से रिटायर कले मोर दुईटा भौणी टीचर गोटे भौणी देहांत हो गला 2015 रे कि आउट भौणी एबी टीचर अछि आ इग्नू रे जॉइन करबा पूर्व 12 वर्ष ओडिसा रो विभिन्न कॉलेज रे पढौथली एवं सेठी भी चंडीगढ़ रे मु प्रथमे 3.5 वर्ष गोटे कॉलेज रे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रे पढौथली आ सबुटु बड़ कथा हुए सब काहे कि पचारले आपण मानकु पिला मानक बही लिखिबारे मु 2012 मसिया रो आज पर्यंत इन्वॉल्व लेके अछि संपुक्त लेके अछि मोर दुईटा सीरीज बही आपण माने चाहिले ताको केबे जदी पास भी देखि पारंती गोटा हला पल्स आउट रिपल्स मु ए कथा काई को मु बही रो प्रचार करिया पे से कथा कहूनी मु एथे पय कहूची जे पिला मानक पय पिला मानको पढेबा पिला मानक पय माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तयारी करबा पिला माननको हैंडल करबा केते बड़ दायित्व सेटा को जानि छुबा काहे कि जतले मु थिली लैंग्वेज एडिटर जो सीरीज रो हमर जने प्रोफेसर थिले प्रोफेसर हरजीत वासुदेव से थिले आपनकर कंटेंट एडिटर मु जतले मटेरियल बनै कि दिए मैडम तो काट दियो तक चेंज करो अरे नाइक जी ये नहीं चलेगा 3 क्लास के बच्चे इसको समझेंगे कभी इसको चेंज करिए मोर कहया माने हला को हम टीचर मानकर बहुत दायित्व रहिछि एवं सबुठ बड़ दायित्व हला जो बही रे जो सिलेबस प्रिस्क्राइब कराई ध्यान दे सुनो तुम कौन कहूछ बही रे जो सिलेबस प्रिस्क्राइब कराई ताको अंध भाबे हमें फॉलो न करी आमर क्रिएटिव आइडिया ता भीतर को हमें इंटीग्रेट करबा दरकार आम सिचुएशन पई हम क्लासरूम पई को मेथड ता भलो से आमटु भलो केई जोटा के सार कोचले डीओ सर निरंजन साहू सर कोचले जे अलग अलग एरिया रे अलग अलग ओडिया भाषा रो से खाली डिफरेंस कोचले को वैरायटी रो ओडिया कहा जाय किंतु आमे माने जानिब रखिबा दरकार ओडिसा एमिति गोटे माटी जो माटी रे 62 प्रकार रो आदिवासी पिला भी रहउचंती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवं एई पिला सब ओडिसा रो विभिन्न कॉर्नर रे विभिन्न कोण रे जो स्कूल सब रहिछि स्कूल रे पिला पाठ पढुचंती एवं सेही पिला मानकू ओडिया सेही अंचल रो ओडिया कहबा पे तांको पक्ष असंभव सेही पय आमे टीचर माने जो माने तांको छोट पिला जो सार कहउछले जो तृतीय श्रेणी रो सॉरी 3 वर्ष रो 9 वर्ष रो पिला को हैंडल करबा 3 वर्ष रो पिला माने कोन आपण जस्ट जो माटी पिंडुळा ताको आमे केमिति साइज दबा केमिति आकार दबा ताको को प्रकार ताको आमे गढी तोलिबा से दायित्व सब आम ऊपर वर्तमान आसीबा जो इनोवेटिव टीचिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनोवेटिव रे म प्रथम आपन कहि रखिली सिलेबस रे जहा छै ताको आमे कवर करबा नो डाउट तुम ताको केमिति कवर करबा सेटा आम ऊपर मु सब बेले जतले आमे सर इंग्लिश रो जतले ट्रेनिंग दोतु मु गोटे कथा कहे क्लास तमरो बही भीतर जो एक्टिविटी रही छै एक्टिविटी तो आमे करेबा तो हमर फोकस रहबा दरकार टीचिंग द स्किल्स नॉट द कंटेंट बही रे जो कंटेंट बा विषय रही छै विषय को खाली पढ़े देले पिला कोन हो आप चारटा क्वेश्चन पकेले क्वेश्चन से मन रखिला आंसर तार तैयारी कला तापर ताको से बेसिस मार्क पाइ गेला ता परदिन जत ताको व्यवहार करिया पे कहिबे दैनंदिन जीवन से किछि कर परिबो सेति पई पिला तार दैनंदिन जीवन में केमिति भाषा को व्यवहार करि परिबो पिला तार दैनंदिन जीवन में केमिति न्यूमेरेसी बा तार संख्या ज्ञान को केमिति व्यवहार करि परिबो ता ऊपर हमें ध्यान देबा दरकार पिला को अलग अलग जो माने समाज रो अलग अलग जो परिस्थिति रही छी अलग अलग सिचुएशन रही छी से सिचुएशन से केमिति भाषा एवं संख्या ज्ञान को व्यवहार करबो परंतु आपण गोटे काम करि परिबे छोट पिला को नै कि आपण हाट को पळे छोट पिला को नै कि आपण हाट को पळे हाट रे पिला पचारिबे यार दाम केते तार दाम केते से संख्या कहबो चारिटार दाम केते तीनटार दाम केते 10 उदाहरण दे पे एतरे कोन होबो से पिला तार भाषा ज्ञान व्यवहार कर परबो संख्या ज्ञान व्यवहार उदाहरण दे पे कहू सेमिति आपण ऑथेंटिक मटेरियल सब बेले यूज करबे चेष्टा करबे जते दूर संभव ऑथेंटिक मटेरियल्स यूज करबे टेक्स्ट बुक तो आप यूज करो ऑथेंटिक मटेरियल माने कोन जोटा कि आपण
दैनंदिन जीवन जो पाउछ धरतु चॉकलेट रो जरी है चॉकलेट जो आप खोली देले तार जरीटा आप फोपाड़ी दउछन ताको पिला को अरे चॉकलेट सब तो खाउछ 10टा जरी करके आस है माने सेम चॉकलेट हवा दरकार सिटी पचार चॉकलेट रो ना कोन चॉकलेट रो रेट केते चॉकलेट कोड तयारी हेची गोटे चॉकलेट रो दाम एति हेले 10टा चॉकलेट केति हबो बुझबल माने ए भला कहि को करियो आपण ताको एमिति पिला को इन्वॉल्व करियो तो सबुठो इंपोर्टेंट हला क्लासरूम रे लर्नर एंगेजमेंट आजकल जो ऑनलाइन क्लासरूम गुडा को फेल मारिबार मुख्य कारण से हमर कोरोना परठु इग्नू रे हमर हजार हजार संख्या रे हमर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई किंतु आपण मन आगे मु कन्फेस करिया पे चाहे ऑनलाइन क्लासरूम्स हैव नॉट बीन दैट सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव तार मुख्य कारण हला लर्नर एंगेजमेंट एबे देखो फेस टू फेस क्लास हम सब एठी बसछे मु प्रत्येक कोण रे के पिला कोन करूछु दैट आई कैन ऑब्जर्व मोर नजर पूरा पूरा क्लास रे सब कर्नर ऊपर रहे सो एवं मोर सिटी कर्तव्य रहिबा दरकार मोर दायित्व रहिबा दरकार जे मोर क्लास श्रेणी रो प्रत्येक पिला से फील करू जे ताको ताको गुरुत्व दिया जाउची ताको इन्वॉल्व कराउची एक्टिविटी हमें टीचर मान कर एक खराब अभ्यास रही छी हमें माने मु कुछ जो खराब टीचर कोन अभ्यास रही छी भलो पिला जो माने कहीं हम सब चाहू हमर बाबा हम केबे चाहिबानी हम के उठे माने बदनाम करू बा हम के गाड़ी को हम कोन करे सब अरे जदि कि आसी पचारो क्वेश्चन पचार जोन अपन कोन करे भलो पिला को उठो अरे प्रतिदिन क्लास रे सब पिला को इन्वॉल्व करूंते जो तार कि पछ लाइन रे जो छुआटा बसची ताकू जिंदु न लागिबो दिस क्लास इज नॉट मेंट फॉर मी से केबे भी फील करबा उचित नो जे क्लास मो पाई नो से कोन करबो आज से फर्स्ट बेंच रे बसची काली की सेकंड बेंच को जीवो तापर थर्ड बेंच को जीवो तापर एथ बेंच को जो तापर पढ़ जीवो ही और शी विल ड्रॉप आउट हमें टीचर माने जदी हम क्लासरूम को अट्रैक्टिव न करबा हमें जदी पिला मानु को हम एंगेज न रखिबा हमें पिला मान को जदी ताको श्रद्धा सम्मान स्नेह न दबा ताहले सेठी कोन होबो पिला केबे भी आगु को पढ़ी परिबो नाही सेति पय हमर एज ए टीचर मु सेति पय पचार आपन केते आप गर्व करछु हमें गर्व करबा निहाती दरकार मो जीवन को उदाहरण मु देबा पे निहाती चाहिबी देरी हलाडी तते सारे को समय टिके नेबी एवं बहुत दिन पर मत गोटे स्टेज रे पर्टिकुलरली टीचर फ्रेंड्स में आगे कहले पे मत चांस मिली ये चांस मिली हमें सब गर्व करे एथि पय दरकार जे हमें मनुष्यर चरित्र गठन करूछ समस्त किए मशीन तयारी करूछ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तयारी कला कि आउ कोन तयारी कला सब कला तो हमें जोटा तयारी करते सेटा मनुष्य को मनुष्य करके रखुछ समाज एवं जो आजकल जो अपना क्राइम और डिटेल जो गुडा सब देखुचे समाज रे ए सब मुख्य कारण हला नैतिक शिक्षा रो अधोपतन महापुरुष पाठ पढ़ाउचे एबे कौन सी सिलेबस रे अपना महापुरुष रो कहानी नै कोठी काम हा कोठी सिलेबस रे अपना दे देला के अदर अपन गोटे महापुरुष बही थिला मोर मन अछि जेतला में सवेत पढु सेतला में महापुरुष बही थिला सेटा में महापुरुष को जीवन रो सिखुथु एबे कोन होछ एबे याडो साडो जो माने आजिकली जो माने सो कॉल्ड महापुरुष जो माने पकरे गंडे पैसा अछि से माने को मॉडल हिसाब रे क्रिएट करा सेटा गोटे हां मो गोटे कथा मो जीवन रो कहै पे चाहिबी मोर मामू जने फॉरेस्ट रेंजर देना मत से कहले अरे अभी मत अभी बोल डाकन अरे अभी बुझिलु मो घरे ना चारिटा लोक अछन काम करिया जने परिवार आन दोची जने ये करदु माने जने बासन सफा करूची आ जने ये करूची स्या करूची मुकल मामू किछ खराब आइबे गोटे कथा कहि मुकल मामू तमे जने जागा ट्रांसफर हे जिवो तमरे ए लोक केही भी तुमको अनेबे किंतु आमे टीचर माने रिटायर कला परे भी जदी गोटे बस भीतर को हम पसिबु हम जो 10 स्टूडेंट थी सब स्टूडेंट एकाथरे ठिया इफ वी आर गुड टीचर्स सम जॉब और आम जॉब भितर डिफरेंस है आउ तो कथा मु कहे पे चाहिए बापा मोर एबे भी गुणपुर रहउचंती
आई बिलोंग टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मोर घर गुणपुर बापा मार एबे भी गुणपुर होत सब बेले मते कहउत मु एटा मोर कर्मस्थल एठी मु चाकरी करछि एठी रिटायर प्राय 30 वर्ष से चाकरी करथि से 28-30 वर्ष कहीं से जुआड़े गले ताको स्टूडेंट से पाउछु कहले एठी मोर गोटे परिचय अछि मु जुआड़े गले आई फील कनेक्टेड मु से भुवनेश्वर जाई को करनी से मोर से केही नै मु बाहर को बाहर मत खाली उठ लागुछि अलडा लोकने होला लागुछि माने मो कहछ आमे टीचर मान प्रति एते एबे भी सम्मान अछि जदि आमे जदि इफ वी कंडक्ट आवरसेल्व्स एज गुड टीचर्स जदि आमे निजको भलो टीचर हिसाब रे गढ़ी तोलिबा एवं पिलांक सहित जोडा सार कहउथिले मु ताको माने 100% मु सेतिले सहमत रापो डेवलप करे पिलांक सहित गोटे व्यक्तिगत संपर्क रहे दरकार आ गोटे जिनिस जोटा कि मो स्टाफ मु कहे मो आपण को भी कहया पे चाहिए मु सबले मो स्टाफ को कहे जे हमर वेकिंग आवर्स जो हम जागृत समय जोटा ताको सबुट अधिक समय हम ऑफिस रे करथु सेति हम ऑफिस रो कलीग मान सहित भलो संपर्क रखला निहाती दरकार मु सेति पई भी सेही जिंस आपण पई भी एप्लीकेबल पिला आपण को सहित जति समय कटोछ ता बापा सहित से कटो वेकिंग आवर्स आपण को साथी से अधिक कटौची सेति तार चरित्र गठन रे आपण मानकर भूमिका अधिक सो टीचर माने भगवान को हम धन्यवाद देबा जे बहुत एत बड़ रेस्पोंसिबिलिटी हमको दैछन्ते भगवान एवं से दायित्व को हम निष्ठार से आउ देखिबे आ गुटे कथा भी मु कहि रखे बिफोर आई वाइंड अप सेटा हला समाज जे सक्सेसफुल लोकंकर उदाहरण आपण नेबे एबे भी आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर बैंक ऑफिसर इंजीनियर जो मान को भी नेबे जदि आपण 100 टा लोक ना बाहर कर ता भी तो 80 एतबे टीचर को छुआ आपण देखो आपण सक्सेसफुल लोक को ना जदि नेबे एबे भी देखंतु आपण जदि टीचर को छुआ से मां टीचर हितो कि बापा टीचर हितो जळे के टीचर थियो निहाती बा ताको परिवार रे केजन टीचर बा माने से बाबू एई पारती कि मो कहला माने को सिटी गोटे प्रकार गोटे संस्कार नै परिवार सिटी गोटे आपनकर एमिति रहइबो सिटी माने जो वातावरण सिटी पिला खराब होबार चांसेस बहुत कम किछि तो आपन क्वचित तो मिलिबे आपन व्यतिक्रम तो मिलिबे आ गोटे उदाहरण मोर चंडीगढ़ रो उदाहरण थिला माने मोर एक्सपीरियंस रो गोटे उदाहरण देबी तापर बंद कर मु एबे मोर कलीग को कहउथिले आसिला बेला चंडीगढ़ रे हमर जो कॉलेज रे पढौथिली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रे सेठी हमर कोन थिला 6 टा सेक्शन गोटे जियोटी थिला से प्रथम वर्ष सेक्शन ए रे थिला मो सेक्शन ता पर वर्ष से कमला प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करी कि सेक्शन सी ना डी कोन थिला सेठी को चेंज करी आसे ता पर वर्ष माउट सेक्शन को मत दिया हला से सेक्शन से आउट रे चेंज करी आसे रिजल्ट बाहरी हला हम सब ठियाई चुनते रैंप रे दिने एमती वर्षा होची माने पर लंबा चौड़ा तगड़ा गोटे 15 सरदार जने आसी मते पचारे इस कॉलेज में नायक जी कौन मुझे जब देखी पहले सर मु तो पूरा जोर भिड़ी की धर देना मते पचार मु पचाली अरे क्या बात है क्यों बताते क्यों नहीं हो अरे आप नहीं जानते हो आप क्या हो एग्जैक्टली से लाइन कोई था मु गर्व से तो कहूची से कहला आप नहीं जानते हो आप क्या हो मो नाकुरी एते प्रशंसा करे आपनकर सब दिन आसी असे जिया मोर से वर्ष कॉलेज रो टॉपर हेतले यूनिवर्सिटी रैंक भी करे अरे मु कहला आपण पिलांको सहित आपण एमिति संपर्क डेवलप करंतु पिलांका अगर एमिति निजो को आपण गड़ी तोलंतु जो द्वारा कि पिला कहिबो जे मते जदि ऑप्शन दिया जाए जे माने भगवान एवं टीचर भितरे ताले मु टीचर को प्रेफर करबी काई माने सी ओके मोर भगवान काई अनेक थर आपण देखिथिबे निज जीवन में भी देखिथिबे जे जदि पिला का एवं मोर आउट एक्सपीरियंस को कहबी मोर छुआ जतले सप्तम श्रेणी में पढुतला तर इंग्लिश तार टीचर कोन भूल कर मु कहली अरे एटा भूल अछि ना ना मोर टीचर तो भूल कर मु इंग्लिश रो मु ट्रेनिंग दोची जो माने से केते तार विश्वास आपण देखो हैला आ पर्टिकुलरली प्राइमरी टीचर मानकर भूमिका अधिक काहे कि से जतो जेमति कहले माटी पिंडुळा समय पूरा पंचा माटी पिंडुळा तांको जेमिति हम कहबा पिला समिति बोली आपण सेति पय देखिबे जो पिला प्राइमरी स्टेज रे भलो स्कूल रे पढितांती प्राइमरी स्टेज रे जो पिला भलो स्कूल रे पढितांती साधारणतः से पिला जीवन रे बहुत उन्नति करिछन आ दिया कहबी नै काहे बहुत समय हलानी मु देखुतली आपण शेड्यूल रे 11:45 जन थिला मत डेटा बसलानी आउ थरे हमर विक्रम सारन को बेरा सारन को निरंजन सारन को समस्त को धन्यवाद देबी
आउ मु जोटा कहे सब मीटिंग रे गोटे जिनस मु करे जोटा इंटीमेट करिया पे चाहिबी मु मोर मोबाइल नंबर समस्त सहित शेयर करिया पे चाहिबी जदी किछि इग्नु विषय रे केबे भी किछि आपन को दरकार पड़िबो कोन सहायता सहायता बा गाइडेंस आपन मोर नंबर ले कांटेक्ट मते करि परिबे 94380 3660 94380 3660 बहुत सहज नंबर 943803 धन्यवाद समस्त all the best for a very successful seminar आज गोटे दिन एक्टिविटी को बंद करंतु ना सार डाकी चंते पेपर प्रेजेंट करचंती फाइन किंतु पेपर लिखिबा जारी रखंतु आउटे न्यूज पेपर तो सॉरी मैगजीन तो अछि टीचर प्लस इट्स ए वंडरफुल न्यूज लेटर जदी आपण कंट्रीब्यूट करना हंती ताकू नियंतु अब निजे भी सेतिरा आर्टिकल दियंतु इफ यू हैव स्ट्रांग बिलीफ इन योर एबिलिटी टीचर प्लस अपन नेट पे सर्च मारले भी मिल जिवो आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द माने सब्सक्राइब टू दैट न्यूज़लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट बहुत दिन माने काम प्रेशर आ करी तो समस्त को धन्यवाद धन्यवाद सर आपनकर अभिभाषण निहाती रूपे हमर बंधुगण को सब अभिप्रेत करछि एवं शांत गुटे बड़ करताल टिके जाऊ एवं आपण माने जानथि जे इग्नो मते बहुत भलो काम करछि जदि केही निजो अपडेट रखा चाहउछंती ए जो दिन जो हायर क्वालिफिकेशन पढिया को चाहउछंती इग्नो रे निहाती एनरोल हुअंतु इग्नो पय मते गुटे करताल गुटे जाऊ सर आपण पय टिके दुई लाइन सर टिके Your gracious presence honors us today. Your gracious presence honors us today. A distinguished guest in every noble way. A distinguished guest in every noble way. With wisdom, wit, and heart, you inspire and guide. A shining star that illuminates our gathering style. We are deeply grateful. We are deeply grateful, sir, for your presence, our pride. Thank you, sir. बंधुगण आपण माने जानछंती जे हम ओडिसा सरकारंकर हमर जो एसीआरटी रहिछि एसीआरटी रो गुटे अभिनव प्रयास होछि डायरेक्ट सेल्स लिंकेज एवं हम जेतले दिल्ली जाइतिलु हम गुटे हेतिला एक्सपोजर विजिट हेतिला सेतिरे मते डायरेक्ट सेल्स लिंकेज को बहुत प्रशंसा करा हेतिला हमर पड़ोसी राज्य माने मते डायरेक्ट सेल्स लिंकेज को ता ऊपर मते रिसर्च करछंती कारण हम ओडिसा डायरेक्ट सेल्स लिंकेज बहुत सुदृढ़ बहुत प्रभावशाली मध्य सो ए उपलक्षे आमर आज पाटन अध्यक्ष महोदय विक्रम कुमार साहू महाशयकर प्रेरणा अनुଯାयी एवं आम डायरेक्ट सेल्स लिंकेज कोऑर्डिनेटर रामकृष्ण परिसा सर प्रेरणा अनुଯାयी आमर डायरेक्ट तरफ गोटे न्यूज़लेटर प्रकाशित होईछि न्यूज़लेटर डायरेक्ट सेल्स लिंकेज स्पेशलिटी सिनर्जी कोलैबोरेटिवली ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एवं आज आम अनुरोध करछु आमर अतिथि वृंद एवं आम सर को एवं आमर समस्त स्टाफ टिके आगो आमे आसी पड़िबा एवं ताको आज आमे अनवेल टिके पड़िबा डॉक्यूमेंटेशन सेक्रेटरी टिके आगो आसीबे एवं समस्त आमे टिके छिड़ाई पड़िबा टिके
धन्यवाद समस्त को आम निज स्थान ग्रहण करबा हेबे। सो ए सेशन रा में अंतिम पर्याय पहुंचछंती ए उपलक्षे भोट ऑफ थैंक्स देवा पई अनुरोध करूची हमर श्रीमती ममिता साहू महोदया से ए सेशन रा भोट ऑफ थैंक्स देबे मैडम। A very good afternoon to all of you. Respected principal and patron of the today's seminar, Sri Vikram Kumar Sahu sir, chief guest Mr. Niranjan Sahu sir, DO ANGUL, distinguished guest Dr. Avinash Naik, senior regional director, IGNO, guest of honor Dr. Purnachandra Bhera sir, Professor NK Navakrishna Chaudhary College of Teacher Education ANGUL, and keynote speaker Dr. Niranjan Deo sir, Assistant Professor, IGNO, New Delhi. Today's seminar convener Sri Madan Sundar Pradhan sir, all faculty of Diet ANGUL Chendipada, all presenter and participant of some school of Diet ANGUL district, all first year and second year people teacher. Again, a very warm welcome to all of you. On behalf of the Institute, I would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for making this event a reasonable, sounding and memorable success. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our principal for providing us with the opportunity to host this seminar and for his unwavering support throughout the event. Thank you, sir. We are also deeply grateful to our honorable guest, Mr. Niranjan Sahu, sir, DO ANGUL, keynote speaker Dr. Niradhar Deo sir, Assistant Professor, IGNO, New Delhi, distinguished guest Dr. Avinash Naik sir, Senior Regional Director, IGNO, New Delhi, guest of honor Dr. Purnachandra Bhera sir, Professor, Navakrishna Chaudhary College of Teacher Education ANGUL, taking us time to join us and share their valuable insight with us. Sir, your presence have truly enriched our seminar and we are thankful for your contribution. To our convener and faculty member, we appreciate your tireless effort in organizing and coordinating the seminar in a successful way. Your dedication and expertise have been instrumental in making this event a successful one. To our student teacher, we are really proud of your active participation and engagement throughout the seminar. Your enthusiasm and eagerness to learn are truly inspiring. Then, to all the participants and presenter of some school of ANGUL district, we are also thankful for your presence and we also expect your contribution to the discussion and seminar session which will surely add depth and value to the seminar. Last but not least, I would also like to thank the entire team that worked behind the scene to make this seminar a successful one. Your hard work and commitment are greatly appreciated. Once again, thank you all for making this district level seminar a memorable and successful. Thank you all. मैडम आपको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। सो वर्तमान आमर इनोग्रेशन एटी शेष हो जाइछि जेबो हमर पाट्रन कर अनुमति नै हमर प्रीमियरी सेशन वर्तमान आरंभ हेबो एवं हमर समस्त अतिथिवृंद को आउतरे मते धन्यवाद। आशा करूछु आगामी दिन रे मते आपण माने उपस्थित रहि हमकु अभिप्रेरित करिवे ए उपलक्षे समस्त को बड़ बड़ताई गुटे जाऊ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସେସନ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତପନ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ଟିକୁ ମାଝୀ ଛେଲିବୁଦା ବ୍ଲକ, ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ସିଆରସିସି, ଦିବାକର ବେହେରା ସିଆରସିସି, ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଡି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। We must be happy that our resource persons, our guests, are very much interested to sit among us and to enjoy and to participate in the presentation. That's a huge sign. That's a good sign from our guests actually. Let us have a huge round of applause for our guests, please. Please give a clap for them. Please, please, please. ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍